Relax. Relax. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. Relax. Hello guys. Hello guys. Hello guys. तो सब कुछ ठीक है ना या कुछ खराबी है, देख लिया जाए एक बार, चेक कर लिया जाए। आवाज तो ठीक आ रहा है।
गेम साउंड भी ठीक आ रहा है। बीम 2 भी आ गया। और बीम 2 There's no need to बीम 2 exchange मेरा छोटा भाई pleasantries. आ गया। It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. चलो ठीक है, शमैट भी आ गया। है ना, शमैट भी आ गया। ये बूम बूम। तो सब कुछ सेट हो गया, आवाज़ सही है, गेम साउंड भी आ रहा है, सब कुछ सही है। पामटी सेटअप थोड़ा कर लिया जाए। पामटी सेटअप इसमें हमको Let's go get ourselves some answers. एम्स को ले लेते हैं। और किसको है? ठीक, इतना तो हटा देगा। ऑल सेट है ना। चलो फिर अपना वीकली स्टार्ट कर लिया जाए। लाइव कैमरा एंड एक्शन। चलो पहले बाउंटीज कर लिया जाए। इसका स्पेशल डैंड्रो डैमेज सही है, इम्यून है। ओके, यहाँ पे आना है। चलो 1080p 60 fps में चमल रहा है ना स्ट्रीम? चमल रहा है कि नहीं चमल रहा है, बताना जरा। यहाँ पे एक डेंड्रोकिलस है। इधर कहाँ पे डेंड्रोकिलस है भाई? यहाँ कहाँ पे डेंड्रोकिलस हो सकता है? यहाँ पे ही कहीं। अच्छा, इसमें हो सकता है। इसमें है, हो नहीं सकता, इसमें है। चलो इसको मार कर आते हैं ना, तो यहाँ पे कलेक्ट करेंगे डेंड्रोकिलस अपना। ठीक है, पहले इसको मार आते हैं। स्टोनर्स गेमिंग, हेलो हेलो स्टोनर्स भाई। खेल नहीं भाई, ये गेम तो नहीं खेलेंगे अभी। इसके बामड़े में हमको कुछ पामता भी नहीं है। नाम सुने हैं बस, खेमले नहीं है कभी। One with nature, as one with wind and cloud. Take flight. Quietly now. Into the wind. My apologies. हम लोग अब ऊपर में ये क्लियर कर लिया जाए, है ना। 30-40 FPS आ रहा मेरा 4th Gen i5 में चल जाता, आपके पीसी में मक्खन चलेगी। अच्छा, 30-40 FPS आ रहा है। ठीक है, ट्राई करेंगे। हेलो हेलो निखिल भाई, डू यू हैव नाहिदा? नहीं, नाहिदा तो नहीं है। मतलब 50-50 हार गए थे लास्ट बार जब आई थी ना बैनर पे, तो हार गए थे। इस बार फिर से ट्राई करेंगे फुल करने का, देखो क्या होता है। इस बार भी तो भाई 50-50 चांसेस ही है, लेकिन ट्राई करेंगे। आ गई तो अच्छी बात है। लेकिन क्लाउड रिटर्न भी तो निकालना है। नहीं चलेगा भाई के पीसी में, मेरा पीसी में नहीं चलेगा।
fun's over. My apologies. Whirling snow. Sakura swirl. हम लोग आराम से क्लीमियर कर जाए। इसको लेके इधर मारना है। अरे यार इसमें एम करने में दिक्कत हो जाता है, हमको थोड़ा सा दिक्कत है और शानदार नहीं है क्योंकि कंट्रोलर है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। वेबकैम किधर गया? अरे वेबकैम इसमें पीएस का कैमरा लगाना पड़ेगा तभी हो पाएगा, बिना पीएस के कैमरा के तो भाई लेनता ही नहीं है ना, यही ना दिक्कत है। अबे ये क्या हुआ भाई? इधर मारे हैं हम। अभी उसमें क्यों जाकर लग रहा है भाई? पागल वागल है क्या? इसमें इससे जाकर लाना पड़ेगा। PS4 कब लिया? PS4 नहीं है, PS5 है। How many wishes did you save? अभी तक तो मेरे पास कितने हैं देखिए, 48 है और इधर कुछ 49-50 के आसपास है। निखिल भाई अभी देखो 45-50 के आसपास तो भी लग रहे हैं। अबे ये घास जलाना पड़ेगा क्या? लगता है ये घास जलाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, तब तक इधर इसको क्लियर कर देते हैं। इतना पैसा किधर से आया? पिटी तो देखी नहीं, गारंटी नहीं है 50-50 है। पिटी लेमिट चेक पिटी किधर है? पिटी देखना पड़ेगा। दूसरे गेम्स ट्राई करो, दूसरे गेम्स। अरे इसमें पबजी डाउनलोड किए हैं, एपेक्स लेजेंड डाउनलोड किए हैं, सब में बोल रहा है कि कंट्रोलर से ही खेलना पड़ेगा, माउस कीबोर्ड का सपोर्ट ही नहीं है। जेनशन तो कैसे कैसे खेल रहे हैं हम। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 53 आई गेस। हाँ 53 है, 53 है। दूसरे गेम्स ट्राई करेंगे भाई पक्का, अब तो करेंगे। घोस्ट ऑफ सुशीमा खेलेंगे, तुम देखोगे घोस्ट ऑफ सुशीमा? बोलो घोस्ट ऑफ सुशीमा देखोगे? घोस्ट ऑफ सुशीमा करे स्ट्रीम देखोगे तो बोलो। पामटी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बेनी को ले लेते हैं ना इसकी जगह, और उसकी जगह बेनी को ले लेते हैं। You want me on your team? ये लो घोस्ट ऑफ सुशीमा। अरे तुम सर्च करो ना PS5 का घोस्ट ऑफ सुशीमा। घोस्ट ऑफ सुशीमा सर्च करो। मेरे पास 60 PT एंड 20 विशेस हैं। विल आई गेट चांसेस? तो लग रहे हैं मिल सकते हैं। देखो कभी कभी अर्ली आ जाती है, कभी कभी नहीं आती। 60, 70, 80 है ना, 90 पर तो कंफर्म है। तुम्हारा 60 है, 20 है, तो तुम्हारा 80 तो ऐसे हो गया। 90 पे कंफर्म है। 10 और जमा कर लो तब तुम्हारा कंफर्म है कि आ जाएगी। वैसे अर्ली भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग। अरे बहुत मस्त गेम है भाई, वो तुम देख कर आओ, मजा आ जाएगा। Let's light it up. ओ भाई साहब, बमड़ा सा आ गया, बमड़ा सा आ गया। लेकिन भाई डुअल शॉक का जो वाइब्रेशन है ना भाई, का तो कोई मतलब आस पास भी नहीं हो सकता। Take flight.
ईमजी पीमजी हम लोग डिस्ट्रॉय हो गया। सीओडी मॉडर्न वॉरफेयर 3 सीओडी मॉडर्न वॉरफेयर भाई 4000 के आसपास का है, 4-5 हजार का है गेम वो। इसमें वही है ना कि गेम को खरीदना पड़ेगा। स्पाइडरमैन के बाद में सोच भाई गेम तो बहुत सारा सोचे, लेकिन वही है भाई घोस्ट ऑफ सुशिमा के लिए 4-5 हजार जमा कर सकते हैं। 5 हजार के आसपास का गेम है वो। ये सारे 4 सही कुछ है, ऑफर में इसको खरीद सकते हैं हम, तो उधर 4000 हो जाएगा। गेम भाई जल्दी जल्दी तो नहीं खरीद पाएंगे। मी नाउ पुलिंग नाइदा एंड C6 फॉर विथ नाइदा वेपन। और भाई सही है डेड फुल तुम्हारा तो। डुअल सेंस हैवी डुअल शॉक PS4। अरे PS4 का बाप है भाई इसका। अभी ऐसे स्प्रिंट कर रहे हैं ना अलग ही टाइप का, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि हाँ कुछ तो दौड़ा रहे हैं। वो बात तो है भाई। कंट्रोलर से मतलब यही है कि हमको बन नहीं रहा, लेकिन कंट्रोलर से खेलने में नेक्स्ट लेवल मजा है वो तो। हेलो ब्रदर, हेलो लव ब्रो, व्हाट्सअप वेलकम टू स्ट्रीम। क्या हाल चाल तुम्हारे? हाँ जी दे दो माइक पे लाइट, मैं बोलना बहुत। चलो इधर हम जाते हैं वापस से। यू ठीक है। तो और बताओ लब भाई, किधर थे तुम सुम्पा से? क्या क्या किया इस दिन भर तुम? हम लो ये गेम थोड़ी ड्रैगन बॉल जी कार्टवर जैसी है ना। ड्रैगन बॉल जी एनीमे तो देखे हैं, लेकिन उसका कैरेक्टर के बारे में मतलब याद नहीं आ रहा अभी हमको। थोड़ा बच्चे में देखते थे ना ड्रैगन बॉल जी, पोगो या कार्टून नेटवर्क पर कहीं तो आता था। कीमदार है भाई ये। कीमदार है भाई ये। हेलो ब्रो, कीमदार हो भाई तुम। कीमदार छिपा हुआ है भाई। ग्लाइड भी करता है तो ये होते रहता है। ड्रैगन बॉल जी OMP। ड्रैगन बॉल जी का अच्छा गेम है वो, नहीं खेले। फार क्राई 6 1.6 का है। फार क्राई 6 ठीक है, फार क्राई 6 करते हैं डाउनलोड। करते अभी तो पैसा नहीं है भाई, अभी तो सब पहले इसी में लग गया है। पैसा वैसा नहीं है अभी, देखते हैं खेलेंगे। गेम तो खेलेंगे पहले। हमको मन है घोस्ट ऑफ सुशिमा, फिर RDR, ये सब गेम खेलने का बहुत मन है। PS5 कब लिया? बस अभी। अच्छा देखो यही था। Into the wind. Quietly now. Teamwork is dream. Wind strider. Busted. Here comes the catch. Take flight. Yeah. Kamisato art. Sumetsu. Yeah. You bro complete. PS5 है तुम्हारे पास? हाँ PS5 है। ये गेम PS5 पे ही खेल रहा है ना। एक किताब वायरल हो रही है इंडिया की, कौन सी? भविष्य मलिका। भविष्य मलिका हो रही है क्या वायरल? एपिक गेम पे गेम क्लेम किए नहीं। कौन सा गेम आया एपिक गेम पे भी? कोई अच्छा सा गेम आया क्या भाई? भाई फालतू गेम देता रहता है यार एपिक पे। अच्छा गेम बहुत कम ही देता है। अभी कौन सा गेम दिया हुआ है? भविष्य मलिका देखा है वीडियो। अच्छा
और बड़े पुराना वाला पेडे घोस्ट, वो पुराना तो बहुत सारा क्लेम किए हुए हैं। अरे एपिक का लाइब्रेरी में तो भाई बहुत सारा गेम भरा हुआ है। अच्छा अच्छा वॉच डॉग ये सब भी है इसमें। तो अगर पीसी रहता है ना मेरे पास भाई, तो गेम को तो दिक्कत ही नहीं था। गेम तो एक से एक अच्छा अच्छा खरीद के रखे हुए हैं उस पर। तो पीसी पर ये भी है ना कि भाई बहुत सारा जुगाड़ भी है। 4 सुइया गरम, बाय द वे सल 4 सुइया गरम। अच्छा प्राइसी वही ना भाई, तुमको जितना भी गेम है सब हमको खरीदना ही पड़ेगा। खरीदने का लगा कोई फायदा नहीं। Let's light it up. Quietly now. Game's up. Fun's over. My apologies. Yeah. यो भाई साहब फुल स्पीड में अपना कर लेना है ये, है ना। पीसी पे इनवाइट क्यों नहीं किया? पीसी पे इनवाइट मतलब Ryzen 5 ले लेते हैं ग्राफिक्स कार्ड लेंगे, देखे वो क्या होता है। अरे यूट्यूब मतलब चलता भी नहीं ना यार अच्छे से कुछ। इधर से पैसा वैसा आता तब आदमी इसे रिस्क लेके कर भी लेता, बोलता है कि हाँ चलो यूट्यूब से कुछ आ भी रहा है, इनकम आ रहा है तो ईएमआई पे ही सामान उठा लो, ईएमआई भर दिया जाएगा। इधर से कुछ है नहीं इनकम तो वही दिक्कत है। और हम मतलब इतना भी कोई मेरा बहुत अमीर खानदान से बिलोंग नहीं करते हैं कि हमको सब आराम से ऐसे मिल जाए। ये सब भी बात है ब्रो। थोड़ा दिक्कत तो है। देखो कास्ट क्या है तुम्हारी? ब्राह्मण हो तो सूर्य ग्रहण का पता होगा। नहीं ब्राह्मण नहीं है हम तो। हम हैं लामला जी। अरे PS5 की जगह पीसी पे इन्वेस्ट करते। नॉट इनवाइट। अच्छा इन्वेस्ट सॉरी आई एम सॉरी ब्रा। अरे जानते हो घुमा फिरा करके अभी यही बेस्ट है। पीसी में बहुत पैसा लग जाएगा। पीसी में 2 से 3 लाख के बिना मतलब 4K में गेम नहीं खेल पाते। इसमें है कि अभी हम 4K में गेम खेल रहे हैं। 4K 120 हर्ट्ज में मेरा गेम चल रहा है। 120 हर्ट्ज गेम तो नहीं चल रहा है लेकिन हाँ 120 हर्ट्ज गेम जब भी सपोर्ट करेगा तो मैच चलेगा। डेडपुल है कि इधर? हाँ डेडपुल है इधर। डेडपुल मेरा भाई है। फोर्ड का मॉनिटर है भी आपके पास? हाँ फोर्ड का मॉनिटर तो है ना। फोर्ड के 120 हर्ट्ज वाला है, 144 हर्ट्ज। कब स्ट्रीम स्टार्ट किया? बस अभी थोड़ा देर पहले ही किए। 6 बजे। हाँ बस इधर ही थोड़ा ज़्यादा देर नहीं हुआ है, 10-15 मिनट हुआ होगा। हाईएस्ट व्यू कितना था? हाईएस्ट व्यू कितना था स्ट्रीम लाइव का और वीडियो का? वीडियो का तो हाईएस्ट मतलब KOA में गया है। पहले मतलब जब अच्छा खासा चल रहा था माइनक्राफ्ट जो खेलते थे उस समय मेरा व्यू रहता था 13-14 वाचिंग रहता था। बस मैक्स तो इतना ही गया अभी तक। लेकिन वो भी पूरा मतलब पूरे टाइम तक नहीं रहता था थोड़ा टाइम फिर ख़त्म हो गया। लेकिन हाँ मैक्स गया था इतना तो है। इतना पैसा बट ऑन द सेम टाइम इतना कम पैसा।
पैसा नहीं है भाई, कहाँ बोल रहे पैसा है। हम तो तुमको उमलू बना रहे हैं भाई। मॉनिटर नहीं है भाई, फोड़ के मॉनिटर मेरा यही है, 1080p ही है। तुम तो प्रैंक कर रहे थे भाई, तुम्हारे साथ तो प्रैंक हो गया ब्रो। उधर देखो कैमरा दिख रहा है, तुम्हारे फ़ोन के ऊपर में कैमरा दिख रहा है, वो कैमरा देखो, तुम्हारे साथ प्रैंक हो गया है। बीच में मुझे लगता है चैनल पर तुम्हारे वीडियोस और स्ट्रीम नहीं किया शायद से। बीच में मुझे लगता है चैनल पर तुमने वीडियो, हाँ बीच में थोड़ा टाइम छूट गया था, बीच में बहुत टाइम छूट गया था। और के मॉनिटर तब क्या है तुम? गंदा बच्चा है भाई, तुम प्रैंक कर रहा था भाई तुम्हारे साथ। तुम तो भाई गुमसा हो जाते हो भाई, तुम तो गुमसा हो जाते हो भाई। गुमसा नहीं हो भाई, तुम प्रैंक कर रहे थे भाई तुम्हारे साथ, तुम तो गुमसा हो जाते हो भाई। लोमर जाना है, लोमर इन्वेस्टिगेट। कोलैब नहीं किया ना तुमने कभी? कोलैब करने का ट्राई तो किए हैं, एक दो छोटे मोटे यूट्यूबर के साथ किए भी, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बड़े वाले भाई करना नहीं चाहते, और हम भी मैसेज नहीं किए कोई बड़े वाले को, झूठ क्यों बोले। कोलैब कोई करना चाहे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई करे तब तो। हाँ Q&A जैसा फील हो Q&A भाई, Q&A करे क्या? 5K पे करे Q&A बोले। चलो देखा जाए, रेपुटेशन तो सारे कंप्लीट हो गए हैं शायद। चल देखते हैं, Q&A वीडियो डाल दो, Q&A वीडियो डाल दें। क्वेश्चन भाई पूछे कोई आता ही नहीं है भाई, क्वेश्चन कौन ही पूछेगा। चीगी चागा रूबी रागा। हाउ माय रेपुटेशन, कैसा है भाई रेपुटेशन, कैसा है भाई? बस अब पंख मिलने ही वाला है कमाइस। मेवन तुम्हारे वाला ठंडी कैसी है, टेम्परेचर कितना है बिहार में? भाई ठंड तो इधर कल तक बहुत ठंड था, मतलब काफ़ी था। आज तो फिर ठंडे पानी से नहाए जब से, हमको अभी तक ठंड नहीं लग रहा, लेकिन हाँ ठंड है। आज धूप निकला है, आज मतलब उतना भी ठंड नहीं है। कल ऐसा था मतलब ऐसे हड्डी कब कपा देने वाला ठंड। आज वैसा ठंड नहीं है क्योंकि आज धूप निकला है, इसलिए आज वैसा ठंड नहीं है। एक महीना रहा, हाँ एक महीना बस काफ़ी रहा, फिर तो ये देखो वैसे भी ठंड वंड नहीं पड़ रहा था, जो ठंड पड़ रहा था जनवरी में एकदम से पड़ा है, दिसंबर में, हाँ दिसंबर लास्ट से ठंड स्टार्ट हुआ है समझो। दिसंबर लास्ट से स्टार्ट हुआ है, जनवरी अभी तक जो है जो रहा है। अभी फिर फैब में थोड़ा सा रहेगा, मार्च में तो फिर ख़त्म ही हो जाएगा। बस यही जो है ठंड है, इतना टाइम है, बाकी सब तो ठीक है भाई। ठंड में यही होता है ना भाई, हाथ निकालने का मन नहीं करता है, पूरा कीबोर्ड माउस पे हाथ रखो ना तो पूरा जम जाता था। ये तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। 2023 तो बारिश में ही गया है पूरा। हाँ भाई बारिश भाई सबसे ख़राब सीज़न लगता है भाई। वैसे
मतलब जैसे तुम्हारा अगर रूम वूम है अच्छा, मतलब अच्छा जगह पे रहते हो, रोड पे नहीं निकलना, तब तो बारिश अच्छा लगता है। बाकी जैसा कहीं तुमको काम वाम है, उस समय बारिश हो गया तब तो दिमाग खराब। मेरी बिल्ली को ऑपरेशन कराना था, उसको रोड वाला कुत्ता काट लिया था। उस टाइम भाई जाना रहता था हॉस्पिटल, बारिश होते रहता था भाई, बहुत दिक्कत हो जाता था ले जाने में उसको। इसीलिए भाई बारिश नहीं पसंद भाई। अभी जो ये स्प्रिंग सीजन आएगा ना, वो बेस्ट सीजन है, उससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता भाई, बेस्ट सीजन है। बिल्ली है तुम्हारी? हाँ रोड पर मिली थी, इसको ले आए थे, फिर उसको क्या हुआ ना, रोड वाला कुत्ता काट लिया था बच्चा में, पूरा उसका इंटेस्टाइन बाहर आ गया था, ऐसा काट लिया था पूरा उसका इंटेस्टाइन ही बाहर आ गया था। तो उसको लेकर के गए थे हॉस्पिटल, फिर उसका इलाज करवाएं। वो तो अच्छा था कि भगवान का शुक्र मानो कि उस समय मेरे पास, हम कुछ पैसा जमा कर रहे थे अपना पीसी अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। तो उस समय मेरे पास था 10,000 के आसपास, तब उसका जान बच गया, सारा पैसा उसी में लगा दिया। नहीं तो भाई पैसा वैसा रहता नहीं है मेरे पास, अभी भी मेरे पास कुछ नहीं है, 100-200 रुपया भी नहीं है, मतलब समझ रहे हो, ऐसा हाल है। अगर ऐसा में उसको कुछ हो जाता भाई, हम तो सोच के ही मेरा हालत ख़राब हो जाता है। जमा किए थे 6-7 महीने से जमा कर रहे थे, 10,000 के आसपास हुआ था, 9,000 कुछ। फिर सोचे भाई जान से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ना, कंप्यूटर का क्या है, कभी ना कभी तो जब होगा तो होगा उसका। उसको ले कर के आए थे, रोड पर थी, मिली थी, उसको लेकर आए थे, कुछ ही दिन हुआ था कि रोड वाला कुत्ता उसको काट लिया। अब कुत्ता भी भाई, रोड वाला कुत्ता, उसको हम ही लोग खाना वाना देते हैं, तो उसको भी लगा कि ये कैसे आ गई, क्या हो गया भाई, कुछ समझ ही नहीं आया। फिर क्या कर सकते हैं, कुत्ता को भी नहीं मारे, उसको क्या मारेंगे, वो भी बेचारा प्यार ही करवाता है। जानवर सबसे बहुत प्यार है भाई, जानवर सब बेस्ट होता है। कितना लगा भाई? 10,000 के आसपास क्या लगी गया, 10,000 पूरा उसी में। जाने आने का खर्चा अलग, वो तो काउंट भी नहीं किया, छोटा मोटा और छोड़ दो। मेन सर्जरी में लग गया बहुत पैसा, सर्जरी का सामान में लग गया पैसा, डॉक्टर लग गया पैसा, फिर वो सब तो हो गया। और भाई दवा में बहुत पैसा लगा भाई, दवा में बहुत ज़्यादा पैसा लगा। कौन सा? हाँ एनिमल का ही था, बहुत अच्छा हॉस्पिटल था, उसमें मतलब सारे जानवर का होता था। यहाँ तक सोचा वहाँ पे खरगोश भी था, बर्ड्स भी लेकर के आ रहे थे लोग, मतलब बहुत अच्छा हॉस्पिटल था। समझो कि उसको जानवरों का बेस्ट हॉस्पिटल में लेकर के गए। पैसा लगा लेकिन बचा लिया भाई, यही बहुत है। लेकिन उसको प्रॉब्लम तो रह ही गया यार, अभी तक भी उसको थोड़ा सा खाना वाना खाता है ना, तो उसको थोड़ा ये हो जाता है। One with nature. यो हानी सिंह। चलो अभी ये तो कर लिए, इसको मार लिए। आज किसका स्टोरी क्वेस्ट करा जाए ये बताओ। 20 रीजन है, कोई एक डोमेन कर लिया जाए क्या? कोई एक अच्छा सा डोमेन वो कर लिया जाए क्या? ये किसका डोमेन है भाई? अच्छा ये किसका डोमेन है भाई? चलो यही कर लेते हैं। फेस कैम नहीं करते ना तुम? फेस कैम करते हैं, मोबाइल से ही कर लिया करो। नहीं अभी पीएस पे खेल रहे हैं ना, तो पीएस पे क्या है कि पीएस का ही कैमरा लगता है, पीएस का कैमरा का 5,000 दाम है भाई, इसीलिए अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे। कुछ जुगाड़ वगाड़ खोज के करते हैं। फेस कैम सही में फेस कैम रहता है तो अच्छा लगता है। पहले तो पीसी मेरा लो इंड था, उस वजह से नहीं कर पा रहे थे।
अभी इसमें है कि कैमरा का भाई लफड़ा लगा दिया कि कैमरा यही कैमरा ही चाहिए इसको तब भी चलेगा। Things are about to get dicey. Fallen leaves, adorn my night. The wind knows me. Embrace the ice. पहले पीसी पे करते थे। हाँ पहले पीसी पे देखते हैं कितना लैग करता था। 720p पे करते थे, बहुत लैग थे। अभी तुम देख रहे हो गेम का क्वालिटी बहुत ज़्यादा मस्त हो गया होगा, है ना। क्रिट डैमेज, एचपी, अटैक, क्रिट रेट भी इधर मिल जाए तो ये बेस्ट हो जाएगा भाई। यो यो हनी सिंह चीकी चीकी चेगा चेगा रूबी रूबी रबर रबर चलो बचाएगा। Take flight. Quietly now. और भाई सब ठीक है? हाँ भाई सब ठीक है भाई, तुम बताओ। कोई आ नहीं रहा भाई स्ट्रीम पे। भाई लब भाई तुम अपने दोस्तों को शेयर करो यार स्ट्रीम में यार, दोस्तों को भाई बुलवाओ यार। तुम क्या कर रहे हो? अपने दोस्तों को बुलवाओ यार। तुम खेलते हो ये गेम? समझ नहीं आता, सब ऊपर से जा रहा है। अच्छा स्ट्रीम देखते रहोगे ना तो तुमको समझ में आ जाएगा। वैसे तुमको अभी क्या नहीं समझ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तुम्हारा कितना लेवल है इसमें अभी? तुम्हारा लेवल कितना है इसमें अभी? एक बार ये गेम ट्राई करूंगा। ट्राई नहीं किया। अच्छा करना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जो अगर तुमको कुछ नहीं समझ में आए कि क्या करना है कैसे करना, तो हम लोग से पूछ लिया करो, स्ट्रीम पे आ जाया करो। डिस्कॉर्ड है तुम्हारे पास, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। कुछ गेम में दिक्कत हो तो डिस्कॉर्ड पे पूछ लिया करो, बहुत सारे लोग रहते हैं, तुमको मदद कर देंगे उधर। हमको भी कुछ नहीं आता था गेम के बारे में। गेम खेलने लगे ना तो खेलते खेलते फिर समझ आने लग गया। खेलोगे तभी समझ में आएगा, खेलते खेलते सब तुमको भी फिर इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। फिर तुम खुद ही सब जान जाओगे। पहले जानते भाई हमको अकाउंट रिव्यू सब नहीं आता था करने। हमको लगता था अरे ये क्या बोल रहा है भाई, अकाउंट रिव्यू क्या होता है, ये सब तो नया नया वर्ड सुन रहे हो। अब देखो कर देते हैं, यही सब है। खेलते खेलते आ जाएगा। अरे एक काम करना था, वरुण ब्रो हाइड हो गया है, उसको अनहाइड करना है। वो हम अभी तक चेक नहीं किया भाई। वरुण को आया भी होगा तो पता नहीं चलेगा। तो पहले अनहाइड करना है, फिर उससे पूछना है भाई कोई उसको हाइड कर दिया था भाई, कोई मॉडरेटर पता ही नहीं। पहले उसको अनहाइड करना है। एक बार ये गेम हाँ ये तो देख लिया है। चैट 1 मिनट रुक जाओ तो चैट नहीं दिखेगा। अरे लेकिन अनहाइड होता ही इधर पे भाई, ये भी तो भाई खोजने का ही बात हो गया ना। देखो सेटिंग्स में हम अगर जाएंगे, चैनल पे अगर हम जाएंगे, एडवांस सेटिंग पे, फीचर, एडवांस सेटिंग, बेसिक्स,
कम्युनिटी में होना चाहिए। मॉड है, मॉड है, ये मॉड है। चल होम गया, अनहाइड होम गया। वरुण ब्रो को मैसेज कर दो। अब वरुण ब्रो मैसेज करेगा तो हमको पता चल जाएगा। वरुण ब्रो को मैसेज कर दें क्या? वरुण ब्रो को मैसेज कर देते हैं। वरुण इधर है। आओ ब्रो स्ट्रीम पे। चलो मैसेज कर दिए उसको। ओके ओके, आ जाएगा वरुण ब्रो। तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं? तब तक हम लोग कर सकते हैं कि आओ एबेस 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 एबेस। चलो टी पॉट में चला जाए, मैंशन पे टेलीपोर्ट मारा जाए। ये धड़ी तो है भाई। We have put in ऑप्शन लगा दो क्राफ्ट के लिए, लगा दो क्राफ्ट के लिए, लगा दो क्राफ्ट के लिए। शामिल हो गया। सब तो सीट्स है भाई। समझने की कोशिश जारी। अरे समझना बहुत इजी है। देखो तुमको करना क्या, रुको तुमको बताते हैं। यार ऑप्शंस बहुत है इसमें, ऑप्शंस बहुत है। देखो तुमको, अरे यार ये बर्बाद हो गया ना मेरा अल्टीमेट बर्बाद हो गया ब्रो। लेकिन बहुत अच्छा लगता है यार देखने में इसका अल्टीमेट। ये देख रहे हो यार, सेक्सी लगता है, सेक्सी तो लगता है भाई। Time to go. ये सब तुमको नहीं करना होगा स्टार्टिंग में, ये सब ऑप्शनल, ये सब तो हम भी नहीं करते। कभी कभी ऐसे भूले भटके आ जाते हैं यार, तो ये सब तुमको नहीं करना है। देखो तुम्हारा गेम स्टार्ट होगा यहाँ से। काम कर रहा है। ओ इसमें स्पेशल फर्नीचर्स अनलॉक करने पड़ते हैं ना, मैप पे अनलॉक करना पड़ता है। बॉस फाइट एंड बॉस फाइट तक पहुंचना, इन कैरेक्टर्स को अनलॉक करके उनके मूव्स को अनलॉक। हाँ ऐसा ही कुछ है, समझ लो ऐसा ही कुछ है ब्रो। इजी है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा तुमको, समझ जाओगे। इजी, बहुत इजीली समझ जाओगे। Clear weather all around brightens the heart. Time to go. Time to go.
अरे मेरा पिंग का क्या? अच्छा मेरा पिंग हाई हो गया ना अचानक से। स्ट्रीम तो नहीं लैग कर रहा है, स्ट्रीम तो चल रहा है। चलो अब क्या करा जाए, किसी का स्टोरी क्वेस्ट स्टार्ट करते हैं अब। दो स्टोरी क्वेस्ट बचा है। चलो आज आयातो का कर लेते हैं आज स्टोरी क्वेस्ट। आज आयातो का कर लेते हैं और आयाका का कर लेंगे। आयाका का स्टोरी क्वेस्ट करनी है शायद, ये आयाका का तो दिख नहीं रहा। हो गया होगा। चलो ये देखो इतना सुंदर सा जगह है। Those two look familiar. Ah, it's Ippei and Shinojo. Oh. Guess they must be good friends, huh? Anyway, let's go say hi. Hi, Ippei. Hi, Shinojo. What are you guys doing here? Oh, it's you. Thanks so much for your help last time. I was just ordering some clothes when I ran into him. You know these two as well? Yes, they helped me and Master Kamaji out a great deal last time. I've never had the chance to say thank you properly. What about you? How do you know them? Also a chance encounter. Our lady had them join us as additional guards for a goods escort in order to sneak out of Rito undetected. So we all know each other, huh? इसके जैसा एक What a फारूक गेम है, coincidence. कौन सा? Not exactly. We've only just met. We both came here to order some clothes and got to chatting. Somehow we ended up on the topic of Master Kamaji and Lady Hiragi's relationship. Wait, it's okay to talk about that, right? It's probably fine. They've known about it for a long time already. Oh, yeah! Paimon remembers those two had a thing. घोस्ट ऑफ त्सुशिमा ट्राई करना PS पे। अरे घोस्ट ऑफ त्सुशिमा बोले तो वो तो खेलेंगे। वो इसी उसी का तो बात कर रहे थे। घोस्ट ऑफ त्सुशिमा खेलना है, PS4 है ना, PS5 है। Are they खेलेंगे यार, taking the घोस्ट ऑफ next step or त्सुशिमा तो something? खेलेंगे पक्का। We have reason to suspect that they'll be getting married soon. Wow, that's great! They can finally make it official! घोस्ट ऑफ त्सुशिमा के लिए तुम खुद Of course, पागल this is हुए just पड़े। personal speculation. They haven't announced anything, and we wouldn't dare to ask. I was instructed to place an order for some formal wear for a big banquet. Turns out that Ippei received the exact same instructions as I did. They're both preparing for a banquet at the same time. They're both purchasing the kind of fine wine and confectionery normally reserved for big festivals. Phobia, It's hard not to put two and two phasmophobia. together. Lady अच्छा ये Hiragi तो has लगता है been कोई in हॉरर high गेम है ना? spirits recently, and ये तो हॉरर I गेम है। heard she's on a diet as well. Surely it's all for the wedding. This is wonderful news! But, What's wrong? Oh, don't mind me. She's about to be happily married to the love of her life. I genuinely couldn't be happier for her. Right? I think so too. It's fantastic. Pacify Yes, Pacify but इस we पे है। shouldn't let ourselves PS पे। get overexcited. What if it's all Pacify a big होगा तो misunderstanding? खेल लेंगे As भाई। things stand, we have no actual proof of a wedding. Now, if they sent me out to deliver wedding invitations, that would be a different हाँ story. Fall Guys है इस पे, Fall Guys तो खेल लेंगे। Fall Guys तो खेल Shinojo सकते हैं। doesn't look like he's taking this very well at all. Sorry, I just haven't slept well recently. I'm ashamed to be so out of sorts at work. I'm not living up to my responsibilities, either to the Kanjo Commission or to my lady. Are you worried about their wedding? Not exactly, it's just everything feels kind of up in the air until they make it official. I get what you mean. I really do. We need this wedding to be set in stone before the celebrations can really begin. What should we do? Should we just straight up ask them? I don't know. That seems a bit rude. Right! If Ayaka knows about it, that means it's a sure thing.
I don't think it's a good idea to bother the Yashiro Commission about this. It's fine. She and Ayaka are practically best buds. There's nothing to worry about. I see. Then thank you. Thank you very much. Having a definite answer will stop my thoughts from running wild. Let's go to the Kamisato estate. मैं लव की हो गया कभी कह रहा बोला और की है ना बहुत और की है गलत लाइन पे आए Let us find shelter from हो जाता है कभी कभी This place impresses me every time I come here. It's so magnificent, but still so elegant. We'll just wait here. We don't want to cause any extra trouble for you. Ayaka wouldn't mind. Honestly, even if we did come with you, we wouldn't know what to say or do once we were inside. So we'll just leave you to it. Alright then, we won't be long. अब किससे बात करना है भाई क्लैन के अंदर आयाका को ही लेके जा रहे हैं आयाका के घर हाँ ये डेडपुल आज नहीं आया इधर डेडपुल आया तो था पता नहीं अभी किधर है ये इधर क्या कर रहा है बैठ के You've ruined my strategy in one move. Amazing. Now what should I do next? Ayaka, Toma, it's us! Hey guys, it's been a while. If you're looking for my lady, I'm afraid she's not here right now. Oh? That voice. Toma, अंग्रेजी would that आदमी happen to है be the वो मुझे traveler? लगता है Yes. अंग्रेजी नहीं है Greetings, भाई है traveler. मेरा Ayaka speaks of you Shota. constantly. Finally, Bangalore में today's the रहता day. I am head of the Kamisato clan and Yashiro commissioner, Kamisato Ayato. Kamisato Ayato Greetings, both. I have long been indebted to you on my sister's behalf. Finally, I have the chance to express my profoundest gratitude to you in person. ना तो मतलब मेरा Ayaka मतलब is out उसके today. If काम you are here अंग्रेजी regarding लगता हाँ anything वो तो related है to the Kamisato clan, you are quite welcome to discuss it with me instead. Oh, hi! Your flattering words flatter us. Please excuse the suddenness of our visit, for ये it ये is बहुत most खराब लगता है improper etiquette. वही दे देती वही ठीक रहता Why है on earth are you talking like that? निकल जाते थे Well, तो बहुत he गंदा seems लगता like है a pretty powerful person. He's already working his way up Paimon's list of people to never mess with. Look, as soon as he stands up, the whole atmosphere in the room changes, and it feels like you gotta be super polite. You shower me with praise undeserved, my little guest. There is no need to be quite so formal. This is a private residence, so please, relax. Oh, good. Because that whole spiel was really tiring just now. We heard a rumor that Kujo Kamaji and Hiragi Chisato are gonna get married soon. Do you know anything about that? Oh? I wouldn't have thought you'd heard about that yet. I see. Well, it's true. It wasn't long ago that I received the news myself. The head clans of two commissions are to become joined through marriage. PUBG PC है PS5 पे हाँ PUBG PC है PS5 पे हम इंस्टॉल भी किए हैं Since the Yashiro अगर उसमें Commission बोलता है presides कि over cultural and कंट्रोलर से ही ceremonial खेलो affairs, it closely तो involves कंट्रोलर से us कैसे too. खेलेंगे हम Yes. And since the commissions are kind of the face of the almighty shogun to the कंट्रोलर से masses, बनता नहीं है खेलने this में wedding is one that we have to treat as a serious affair. फोर्टनाइट में है माउस कीबोर्ड का सपोर्ट लेकिन फोर्टनाइट हमको समझ नहीं आता Two true कॉल ऑफ lovers ड्यूटी सब में है becoming सपोर्ट नहीं husband कॉल ऑफ and ड्यूटी wife. पैसा वाला है What वो a है नहीं मेरे occasion. पास It is. High-profile matrimonial links between two commissions are extremely rare. But these two truly love each other. Tradition should give way to freedom in this case.
All right then. I'll be sure to pay them a visit to send the best wishes of the Kamisato clan. No need. I'll visit them personally this time. Huh? But you have other things to be doing. This is a marriage between the Kujo clan and the Hiragi clan. The Kamisato clan must demonstrate an appropriate level of respect. GTA 5 ट्राई किया हाँ GTA 5 ट्राई किया है इसमें ऑनलाइन ही ट्राई किया ऑनलाइन का फिर सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ जाता है GTA 5 का तो CD मिला था तो CD से खेलते हैं भाई स्टोरी क्या है ही खेले भाई GTA 5 तो खेले हुए ऑनलाइन में PC पे खेलता था ना ऑनलाइन तो उधर बहुत चीजें उसमें ऑनलाइन में तो हम भाई मिलियनर हैं I presume you two have a special connection with the individuals in question, or you would not be quite so interested in this matter. This being the case, why not come and offer your best wishes too? Or is my presumption incorrect? Oh, it's not as interesting as you make it sound. No special connections here. Super ordinary ones, actually. We just agreed to help deliver a letter this one time, that's all. Although, wait. Does that mean we helped make this wedding happen? Alright then. I cannot thank you enough. Your mere presence shall surely mean we are spared the futile pursuit साथ में होगा गेम में तब मजा आता है हाँ ऑनलाइन में कोई रहता है ना साथ में तब भाई हाइस्ट करने में बहुत कुछ है ना उसमें करने के लिए तब मजा आता है Small talk is a chore. हेलो पीकर्स बिजी लोग भाई बिजी बड़े लोग बिजी लोग आईफोन वाले लोग यार not one of them. Toma, I'm heading out with my two guests now. I'll leave the residence in your capable hands. Not a problem. Take care, my lord. PS वाले लोग कहाँ भाई आईफोन से तो सस्ता ही है जितना का तुम्हारा आईफोन है इतना में तो 2 को आ जाएगा You're finally... Yashiro Commissioner! Who are these two? They're friends of ours. I'll do the introductions. भाई कहाँ है तुम्हारा डेडपूल दिख नहीं रहा आज पता है भाई गेम हम खेल रहा होगा पता नहीं कभी डेली आता है कभी एकदम गायब हो जाता है उसका भाई अपना कुछ चलता रहता पता नहीं Great, so our hunch was spot on. It is a little inappropriate for me to have shared news of this magnitude with you. So I would be much obliged if you could keep it in strict confidence until an official public announcement is made. Don't worry, sir. We give you our word. We won't tell anyone about it. That puts my mind at ease. Now, on the topic. We'd like to pay a visit to the Kujo clan. Would you mind leading the way for us? Of course not. I'd be honored. हो गया स्ट्रीम को I guess बहुत देर हो गया Goodbye then. Aw, cheer up, Shanojo. I'll try. Thank you. रोने का है लगा भाई बच्चा रोने का है लगा भाई नाली में आकर गिर जाती है यार पार्टी में तुम्हारा स्ट्रीम देख रहे हैं तुम ना पार्टी में तुम तो स्ट्रीम नहीं देखी All right then. Please excuse me. ओके मेवन भाई जाते हैं जा रहे भाई Okay. Thanks, Gpay. तुम चले जाओगे फिर क्या करेंगे I बताओ apologize that your impromptu visit comes at a busy तुम time रहते for हो us, तो भाई बात Commissioner. करते रहते हो Otherwise, you can be sure that we would have prepared a more extravagant reception. I don't mean to impose, Sir Kujo. In fact, I'm not here on official business at all. I heard the good news about yourself and Lady Hiragi. What a glorious marital alliance this shall be. Given the close ties between our clans,
It seemed only right that I should come and offer the Kamisato clan's congratulations in person. पार्टी के सारे लोग से सब्सक्राइब करवा दे क्या? करवा दो सबसे। सब कुछ स्ट्रीम पे ये बोला लो वाचिंग बढ़ जाएगा। कल भी स्ट्रीम किया था तुमने? कल हाँ कल भी तो किए थे स्ट्रीम। कल भी किए थे कल भी करेंगे। I'm still acclimating to the position of acting head of the clan. I just hope I'm up to the task, so I can live up to everyone's expectations. You're far too modest. The public thinks very highly of you. They say you're hardworking, upright, and responsible. I'm flattered, but I wouldn't have achieved anything without the support of my people. Thanks to them, everything is gradually stabilizing, and I've finally had the chance to focus a little on my personal life. Well, you're certainly making big progress in that department. Come on now, you're embarrassing me. Pardon me, It's perfectly all right. Please, continue. I'm quite content to listen. It's a joyous occasion. Light-hearted is exactly how things should be. Really, who stays stony-faced when talking about a wedding? You're right. But I am curious to know, what's your honest opinion on the whole thing? Do you think it's too sudden? Of course not. Where there is true love, nothing should be allowed to stand in its ग्राफिक्स भाई ऐसा लग रहा है कि कट सीन ही देख रहे हैं ना? Colorful variety of opinions. बताओ तुम लोगों को कैसा लग रहा है? लग रहा है ऐसा कट सीन ही चल रहा है। You have factored this into your decision, and I'm sure you are prepared for whatever challenges may lie ahead. Indeed, I am. ईगो तो फुल मजे में पार्टी कर रही है। Be confident. When your mind is made up, you ought not be worried about things for which you are already well prepared. Nevertheless, there is just one small aspect of this that puzzles me a little. Please, go ahead. You've been working hard to bring the Tenryou Commission in line. This is positive, and no doubt the beginning of important change. But on the other side of this equation, Lady Hiragi's father, Hiragi Shinsuke, is still in prison. If you choose now, of all moments, to announce a marriage between the Hiragi and Kujo clans, पार्टी में भी तुम्हारा स्ट्रीम नहीं भूली। भूल गई थी मैसेज करके इसको बुलाए हैं। are not likely to be in either of your best interests. Yeah. Couldn't have put it better myself, Sir Kamisato. मैसेज किया था भाई। This has been my biggest concern for quite a while now. Hiragi Shinsuke is firmly against me having any contact at all with Chisato. In the past, we've always had to communicate in secret by sending letters. So although now may not look like the best timing for this marriage, it may well be the only opportunity we have. Oh, that guy? Yeah, he acts like this sweet old man, but he उस टाइम फोन हाथ में नहीं था, चार्ज में था। अच्छा। I can see where you're coming from, but you're only postponing the problem, not solving it. You will still have to face it sooner or खाने में later. क्या-क्या है? बताओ भाई, खाने में क्या-क्या है? I'm well aware of that. But since Chisato had the courage to ask me to marry her in spite of everything, how can I disappoint her? Well, sort of. She raised the idea in a letter, and after some initial hesitation, I went to meet her and have a serious conversation about our future. It's funny, actually, because when I formally proposed to her in person, she denied having ever written that letter. So coy. Huh? Really? She didn't say. She just acted confused by the whole thing. She really committed to it. I'll never forget the look on her face. रसमलाई होना तब मजा आ जाता है। Anyway, as her boyfriend, I knew she हो was गई यार discontented, बर्थडे पार्टी so सब I कुछ played रखी along हुई and said, खाने के पास नहीं गए हम अभी झूठ बोल रही है ये पूरा After खाना making खा के some खत्म कर दिया disgruntled अकेले noises खा about गई me सारा making a stupid joke, she blushed and said yes. We spent that afternoon working through all the details of the wedding. Okay. So you discussed it and decided on a date. रसगुल्ला है ना I guess it was a chance to finally express our commitment to one another, clearly and completely. And you know what? I think it was about time. No matter what happens next, I will always be there for her as the one person she can always rely on. Oh, give me a break. हट अभी कुछ नहीं खाए झूठ नहीं बोलो बहुत झूठ बोलती है Is it just this dude or does everyone in love? Apologies, my friends, and also to Sir Kamisato.
चाउमीन मंचूरियन यही सब होगा और क्या रखेगा? On the contrary, seeing you so मिस्टेक का positively बर्थडे है smitten ना, puts तो my mind at मिस्टेक जैसा rest. चीज रखेगा. No surer evidence could there be of your true feelings and your commitment. If I had any reservations before, I certainly don't now. I wish you a joyous wedding when the day comes. Yeah, even if it's kinda irritating to see you all smug like this, it's still a happy occasion. Good luck on the day, and have गरम a happy wedding. चीज मुंह बना रही है बेचारी पीकूस. It means a lot. We have some other business to attend to now. Until next time. Very well. I'll see you out. पहले यार पानी पकौड़ी बहुत रखते थे, अब नहीं रखता कोई पार्टी में, He seems busy. मैरिज फंक्शन That में. must be आलू true for टिक्की anyone डोसा. about to get married, right? इधर कोई कोई रखता It's है a सडो. kind of busy though. भाई आपको Kujo मेरा Kamaji एक is on सीक्रेट cloud 9. जानना है भाई. What do you बताओ भाई, think, A1 traveler? गेमिंग अपना एक सीक्रेट हमको बताओ तुम. अब तुम हमको अपना सीक्रेट बताओ, हम तुम्हारा सीक्रेट जान देंगे, फिर हम तुमको ब्लैकमेल करेंगे, फिर तुमसे हम पैसा मांगेंगे बहुत सारा, फिर उससे सारा पैसा से अपना हम पीसी बिल्ड करवा लेंगे भाई. चलो A1 गेमिंग अपना सीक्रेट बता दो अब. But unfortunately, attempting to seek the truth of the matter would likely be fruitless. Yeah, how come? Whenever we come across इडली stuff डोसा like तो this on नहीं our खाए adventures, we always find a way अभी to तक get to the पार्टी bottom में. of it. डोसा तो I हम see. खाए आज घर में. So that's how adventurers मम्मी think. बनाए. In my opinion, Domsa. we face two obstacles in this case. Firstly, we have very little information to go on, and I must be cautious about taking a stance. This makes it difficult to investigate. कोई Secondly, करता and है. more हाँ कोई में importantly, रहता है. the person involved doesn't साउथ seem में to रखता होगा care. बहुत ज्यादा है ना. If we intervene बढ़िया. without his blessing, good intentions रात may को, lead हा, to हा. catastrophic results. Yeah. You do have a point. Kamaji doesn't seem worried at all. Everything in the world is intertwined. What looks like a simple outcome is often the result of वहाँ पे भाई multiple conflicting ऊपर में reasons. दिखा रहा है कोई एक व्यू Seeking पॉइंट the full अनलॉक करना truth है. would be a बताओ. long and laborious process. It would be inefficient. Sort of. I have to take this approach, or the work of the Yashiro Commissioner would never be done. My opinion is something यही like कभी this. शाम पार्टी जाता When शाम ही something होता है. strange happens, instead of trying to find out what could have caused it, it is better to look at the खाओ situation हमको itself. थोड़ी खिलाओगे If the डोसा. outcome is तुम positive, तो and अपना no one was पार्टी में ही deceived or बिजी harmed, हो. we don't know पार्टी में yet. तुम अच्छा अच्छा चीज खाओगे, After डोसा क्या all, खाओगे? we don't know what Hiragi Chisato's thoughts are. मेरे do we? पास 5 I have to say, बॉडी पिलो I'm है. impressed by your ability to राइडन, zero in on the सिंगन, issue from such a short meeting. पाइमोन, Most नाइदा, insightful of सोनिया. you. सच्ची You में are फोटो thorough भेजो तो and भाई. thoughtful, just as my फोटो sister भेजो तो दिखाओ describes. जल्दी से A1 गेमिंग भाई. फोटो भेजना डिस्कॉर्ड पे देखेंगे Chisato and कैसा Kamaji पिल्लो have है. already talked everything through, haven't they? डोसा में मसाला भी साथ हो Only if तब we are to मजा take आता है. Kujo सही में Kamaji तो at his मसाला word. डोसा ही तो रहता है यार. But there are two sides नॉर्मल to every सादा story. डोसा कौन खाता है? I मसाला wish डोसा to ही. know Hiragi Chisato's angle on this. क्या हुआ? Makes sense, but Paimon still doesn't quite get it. मसाला about it. डोसा. I was planning to visit the Hiragi clan to deliver my best wishes anyway. Let's take the हम 18 opportunity डिग्री to hear सेल्सियस her है अभी यहाँ thoughts. पे. If she's as Temperature. committed as Kujo Kamaji, perhaps they can navigate the challenges ahead successfully. But if not, well, फोटो लेके क्या करोगे भाई? life isn't देखेंगे always कैसा a है smooth पिल्लो. journey. कुछ नहीं, बस हर्ट हुआ थोड़ा. तुमको हर्ट होगा, तुमको हर्ट हो ही नहीं सकता. बीच में ये मोमोज बहुत फेमस हुआ था ना. अरे मोमोज तो बहुत हम लोग खाते थे यार. MNC जा करके मोमो नेशन कैफे, वहाँ पर जा करके हम लोग खाते थे. पिज़्ज़ा मोमो, क्रिस्पी मोमो, अफगानी मोमो, यही सब मोमोज खाते थे भाई. बहुत पैसा लग जाता था. हट एवन के भाई गंदा बच्चा है भाई. हट तुम भाई रखे हुए हम देख नहीं सकते भाई. तुम क्या करते हो पिलो के साथ? Should we also invite some हाँ prominent हम business तो leaders who frequently हार्टलेस visit है ना. Rito? हमको क्यों हर्ट होगा? At the very अरे least, आप we तो should send them करेक्ट बात बोल invitations. दी. एवन मुझे जलेबी कौन सी अच्छी लगती है, पतली वाली या मोटी वाली? Ah, hello हमको there, जलेबी अच्छी Yashiro लगती है Commissioner. मोटी वाली.
To what do we owe the honor on this fine day? As it happens, I'm here regarding the same wedding I believe I heard you discussing just now. I come bearing the felicitations of the Kamisato clan. Would Lady Hiragi happen to be available at this moment? Our lady is entertaining guests right now, and we're not entirely sure how long she will be. But please, do come in. बहुत बोल दिया साइड से अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं भाई बोलो बोलो जितना बोल सकते उतना बोलो चलिए भी बेबी सुनो बिल्लो के साथ कुछ नहीं कुछ नहीं करता भाई झूठ नहीं बोलो भाई तुम्हारा झूठ पकड़ा गया भाई We'll just wander around in the general area. पकड़ा गया भाई अब तो Apologies for the interruption while you're busy with इसलिए फोटो नहीं भेज रहे पता चल जाएगा ना let us know once Lady Hiragi is available. Nonsense, Commissioner. A1 Gaming का चोमड़ी पकड़ा गया भाई. This wedding is a joyful occasion, and all the other clans who serve the Hiragi clan are most delighted for them indeed. We're merely doing the best we can to make this wedding as grand an affair as possible. शामदी का बात चल रहा है भाई आयातों का शादी हो रहा है क्या आयातो शादी किससे कर रहा है मेरी तो जीएफ है भाई बिल्लू के साथ क्या करूं भाई झूठ बोल रहे हो भाई तुम कुछ तो गड़बड़ है भाई तुम्हारे पास बिल्लू क्यों है फिर वो भी नाहिदा का अरे विश नहीं करना यार एक विश कर दे क्या राइडन शोगन आ गई नहीं आई भाई एवेंजर्स ऑफ डॉन चल चल चीगी चागा चागा Our timing was not 49 meter ही तो ही चल The owner always manages to come up with novel ideas. I'm one of his regular customers. Oh, it's Toki! लगता है पीको इतना Good to see you again. Seems like you're always showing up with मीठा सुन के रसगुल्ला 6-7 तो खाएंगी हाँ वो 6-10 वाला खाएगी मावा कचौड़ी खाई किसी ने मावा कचौड़ी तो नहीं खाई है भाई पी लो वो अब क्या बोलोगे A1 गेमिंग वाले तो फंस गए आज तो लास्ट डे था यार आज भी नहीं बताओ आज भी नहीं निकली यार पकड़ा गया मैं पिल्लो के साथ जान के अब खुश और नहीं तो क्या भाई I always order one of his creative A1 drinks गेमिंग का whenever I सीक्रेट pass the पता stall. चल गया भाई Flavor A1 गेमिंग अब always तुमको new and ब्लैकमेल interesting. करेंगे भाई When I noticed he'd set up shop in अपना Rio, ईमेल दे दो I तुमको simply had to ब्लैकमेल come करेंगे by. हम Thanks to you all. एक से ज्यादा नहीं खाते हम मीठा मीठा नहीं पसंद बोले दो 3 दिन को चॉकलेट खा गई थी उस दिन हमको भी नहीं दी अपने खा गई पूरा केले के मीठा नहीं पसंद हमको एगो दुबई का चॉकलेट था एगो पोलैंड का चॉकलेट था एगो स्विट्जरलैंड का चॉकलेट था सब खा के ठूस के तुरंत स्पीड में हमको मेरा माउसो को भी नहीं दी बदमाश है पूरा आओ बोले थे स्नीकर्स भी लाओ I've decided to give complete creative स्नीकर्स control भी to खाएंगे I offer all sorts of ingredients, and they pick and choose whatever they want to mix with their milk or tea. कहीं मेरे As well as Dango, I now offer rice cake, purple potato balls, black sugar, and sunsettia. खत्म हो जाऊंगा अरे चॉकलेट मीठा पसंद है बस और उसके अलावा कुछ नहीं झूठ What if I were to choose some ingredients you don't have here? Would that be okay? Well, झूठ बोले राहुल कटे any novel ideas you have, दो मोस्ट को Commissioner, तुम ऐसा please feel बोल free रही to tell तुम me. I'll go buy the ingredients right away. मेरा The दो whole मोस्ट को idea was ऐसा to मत let my बोल दो customers express their creativity freely, so of course I shouldn't place restrictions on the ये क्या ingredients हुआ? if I can help it. Excellent. There are a few things I'd like to try. Lavender melon, seagrass, and sea ganoderma. ओके बाय भाई जा रहा भाई लब भाई चलो कोई निकल आ जाना याद से ठीक है I do indeed. Why? What's wrong? तुम आते हो तो भाई मन You लगता है really think that's gonna turn out tasting good? It's all about the experience. हम बोलेंगे The मेरी taste is मर्जी secondary. It's great to try new things. मेरा दोस्त को Traveler, any thoughts?
C grasses, C कुछ कुछ है. Let's go for Dango. Yes, Dango. Dango will do nicely. An ordinary choice, but there's nothing wrong with that. 2 Dango milks and 1 milk with lavender melon, please. No problem. Give me a second. I'll have them ready in just a moment. Here, your milk is ready. Give it a try. Milk remedy हो गया. Dango milk tastes pretty good once you get used to it. What about yours? A most memorable texture indeed. A success, I'd say. Your review seemed pretty positive, but Paimon still thinks there are better combinations. Taste is your key concern, yes? Obviously! Tasty food and drinks are some of life's most important pursuits. Well said. Yes. No one has unlimited energy, and I try to conserve mine for the things that really count. To create some mental breathing room, I try not to overthink the less critical matters. Having my sister attend public events in my stead and having Toma as housekeeper has also been a great help and allowed me to focus. We're just passing the time here though, right? Is there anything else to think about than what we're doing right now? 1 or 2 things. Let's continue this discussion somewhere else. I noticed something before we left the Hiragi clan's residence. No, it was just a small detail. I was curious to know their thoughts on the wedding, so I asked them about it. Naturally, they responded that all other clans are happy for the Hiragi clan. But that's not the truth. What do you mean? Hiragi Shinsuke is still in prison, meaning the Kanjo Commission is the least stable in the Tri-Commission. Hiragi Chisato is the sole remaining pillar of her clan, but now she plans to marry into the Kujo clan. If I belonged to one of the assisting clans to the Hiragis, I would not be feeling optimistic about the future. But they didn't mention a word about that. They simply said they were delighted for them. These are not unintelligent people. I imagine they didn't want to discuss family issues in front of outsiders. But still, the more I think back over that conversation, the more it doesn't sit right. वही तो बोल रहे हैं भाई. Keep a close मेन eye तो on हम them, Hisashi. उसी का देखने के लिए बोल रहे थे. Yes, sir. दिखाओ तो भाई कैसा है भाई, देखिए Where जरा. did you come from? This is one of my most trusted members of the Shimatsuban. He's been quietly watching out for us this whole time. Merely doing my duties, sir. Keep a close watch on the clan representatives we met today. Well received. I'm on the case. Oh, and I almost forgot. That milk I just had? Please order 1 more and deliver it to Toma. As you wish, sir. Oh no, poor Toma. Sir Kamisato, Lady Hiragi's previous engagement is तुमको now इतना concluded. चल गया मजड़ा. She's अरे वो waiting for you in देखते the हैं भाई courtyard. कैसा पीलो है, क्या Thank you पीलो है kindly. थोड़ा. Let's go and see Hiragi Chisato. पीलो वॉश भी नहीं किया उसके फेस पे. हाँ, वही तो जानते थे हम, जानते थे भाई. गुस्सा आ रहा है हमको. तुमको गुस्सा क्यों आ रहा है भाई? I heard that ग्राफिक्स देखो Sir कितना सुंदर Kamisato लग had रहा brought है some guests, सनसेट का. but I didn't know it was you two. It's been a while, Lady Hiragi. How have you Lady been Hiragi. faring? This is a rare privilege, Sir Kamisato. It is not often that I have the chance to meet you, let alone here in the comfort of my own home. I'm doing very well indeed, thank you. You must be so busy. Thank you so much for taking the time to come and congratulate Kamaji and I. It really means a lot. But of course, the Tri-Commission are the servants of the Shogun, and we should look out for one another. In fact, we visited Sir Kujo just now. It's clear that he's very much looking forward to the wedding. Perhaps his joy is infectious,
for I am now feeling rather elated myself. I sincerely wish you a joyful wedding and a blissful इतने टाइम बाद भाई बड़े लोग भाई Thank you for your kind words. Realme 13 Pro वाली आई है. This was not an easy decision to make. We will both have to work harder from now on. स्नेहा I'm बड़े sure लोग. the news will cause something of a Welcome to stir. stream. But come what may, एक टाइम था स्नेहा सबका वेलकम करती थी. स्नेहा का वेलकम हो रहा है. पैसा कमाने लग गई है अब यही भरेगी पूरा EMI मेरा PlayStation का. Yes. Thank you स्नेहा PlayStation स्पॉन्सर करने के लिए. I'm still a little nervous about it all. EMI टाइम से दे देना महीना का 1 तारीख को. His promises have comforted me a lot. It sounds like you have some considerable reservations, Lady Hiragi. Yes. Well, there are so many things I need to consider. In case you were wondering, I was not actually Hunter Gaming, hello bro. Yo Hunter भाई, अरे Hunter भाई, thank you भाई कोर्स के लिए भाई. Primos मिल गया भाई बहुत सारा. मोड़ा भी मिल गया. Oh, really? Him? Thank you bro. He charged in all of a sudden and said that he had something very important to tell me. He didn't mince his words. Basically, he doesn't want. He has always been a calm and contained person who never acts out of line. I was quite shocked to see him so agitated. But despite all that, what he was saying made a lot of sense. ये क्या होता है? He thinks that now is a bad time for this wedding to happen. He pointed out that I am like the final pillar propping up my clan. If I marry into the Kujo clan, that pillar is taken away. There will no longer be a voice of authority in the Hiragi clan. And it could be a disastrous move for my personal image, too. It's just 2 families becoming one big family, though, right? What's the big deal? Traditionally, in Inazuma, clan affiliation influences every facet of life. After the wedding, Lady Hiragi will belong to the Kujo clan. The Kanjo Commission's attitude toward you may undergo some significant changes thereafter. Precisely. This is a terrible thing to be saying, but I'm starting to have second thoughts. Maybe I went along with it all too easily. Maybe I allowed myself to be pushed into this. I'm so sorry. I can't believe I'm making my guests listen to me complaining. Nope. No problem at all. The Yashiro Commission has a duty to listen to you. Now that I've heard your concerns, I should offer to help you as best I can. For instance, by helping you gather your thoughts on the matter. Now, we heard from Sir Kujo that his decision to tie the knot was prompted by a letter he received from you. But we've also heard that you did not write that letter. Sir Kujo thought that perhaps you were just being coy. Oh, dear. Perhaps I should have kept that part to myself. What? But that was... It was just a prop in his playful proposal, wasn't it? It was clearly purpose-designed, what with all the fancy lettering and so on. Fancy lettering, you say? So I am to understand that had it not been for this letter, you two may not have chosen this moment to be wed? When it comes down to it, yes, I think so. चली गई क्या? अरे बड़े लोग भाई आते हैं जाते हैं भाई स्नेहा बड़े लोग भाई. Do you mean to say that this letter is not what I thought it to be? Sir Kujo maintains that the letter was penned by your hand. Huh? But then... How did... Either way, it's 1 minute में आया, 1 minute में आ both trust one another. In that sense, you could say 1 minute that में the एकदम आ origin जाओ. of the letter is ultimately not of great importance. Who knows? Perhaps Sir Kujo was the one being coy. After all, he had no particular reason to be forthcoming with us about the details of his playful proposal. I understand. 2 minute में As you say, ultimately, the तुमको तो origin मन of the नहीं letter doesn't करता matter. But my position does matter. Kamaji and I thought that we आयातों का स्टोरी कर रहे हैं आज उसके बाद lies चाइल्डी का ahead, स्टोरी बचेगा बस because फिर we can सारा face स्टोरी it all क्वेस्ट together. खत्म But now, फिर वर्ल्ड क्वेस्ट खोज खाच के करेंगे कुछ
I think I फिर should give अपना it आर्कन some more क्वेस्ट thought. स्टार्ट कर देंगे Marriage is the most important Fontaine decision का of your life. Don't let yourself regret it. It is also part of the Yashiro Commission's job to help people through difficult times. I say this as an बेस्टी advocate कहाँ for गई you तुम्हारे personally उसको बुलाओ and for the मेरी Hiragi बेस्टी clan. पता नहीं यार किन्ने भाग जाती है Please, do not be compelled by circumstances to make any decision that goes against your will. To be together with the one you love is a sacred thing. It is my earnest wish that both of you may enjoy a bright and beautiful future, not a bittersweet one. अभी यार चेक कर Every लो word you have said to me. मेन हीरो I can't thank you enough, Sir Kamisato. I'll think very carefully about your advice. All that matters is that you follow your heart. अंडर भाई क्या बोले भाई समझ नहीं आया Since you'll be needing some time to think things over, we will excuse ourselves now. Oh, wait. Let me see you out. Thank you, Lady Hiragi, but there will be no need. Traveler, let's find somewhere to talk. Hiragi Chisato is on a totally different page than Kujo Kamaji. Hayato, why did you give her such vague suggestions? Couldn't you just have told her what you'd do in her position? Because Paimon's pretty sure you have an idea. I've said everything I can, given the Yashiro Commission's stance. Interfering too much with other commissions' domestic issues will only create trouble. The more I think about it, the stranger this all seems. But Hiragi Chisato has yet to see it. We must be vigilant. In what way? Someone wants Hiragi Chisato to be married as soon as possible. And if my guess is right, it is someone from within the Kanjo Commission. This person is presumably also responsible for the mysterious and misleading letter. Think about this. A lowly officer is greatly worried about Hiragi Chisato's future, while the heads of the supporting clans ostensibly have no concern at all. It doesn't add up. When someone's words and actions do not match, you need to infer their intentions from their behavior. Yes, it's a smart strategy. Far superior to the one adopted by the Tenryou Commission's Takatsukasa clan. Even had the forged letter failed and been seen for what it was, there would have been no repercussions. They could simply have explained it away as a misguided but well-meaning matchmaking attempt by a member of the family. But if the letter were to achieve its goal, as it has so far, the perpetrator would successfully weaken the Hiragi clan without ever having to lift a finger against them, all under the guise of simply encouraging a wedding. With Hiragi Chisato having married into the Kujo clan and the head of the Hiragi clan in prison, challenges to the Hiragi clan's leadership would begin to emerge throughout the ranks of the Kanjo Commission. Eventually, another clan would take the Hiragi clan's place. Actually, we have evidence. His name is Shinojo. Shinojo? He should be back by now. Yes, sir. That's the second time you've done that! Paimon cannot deal with this. Did they take one of the Kanjo Commission officers away? Yes. His name is Shinojo. As I expected. They cannot afford to let this opportunity pass them by. They have to act now while the Hiragi clan is at its weakest. Hiragi Chisato had been persuaded by Kujo Kamaji, and the wedding was sure to go ahead. But after Chisato's meeting with Shinojo, she began to have second thoughts. In their eyes, Officer Shinojo has interfered with their plan. But why did they suspect him and not us? Someone was eavesdropping on our conversation with Chisato the entire time. That's why I was a little reserved. No way! Whew. Lucky Paimon didn't say anything stupid.
But Chisato got what you meant about the letter. भाई आपका चैनल मोनेटाइज हुआ क्या? मोनेटाइज हो क्या? डिमोनेटाइज हो गया? Whoever is behind this will not allow their plan to fail now. They will not be inclined to respect Hiragi Chisato's own wishes. Her stance was so passive that she was easily manipulated, treated like a pawn, with even her marriage becoming a battleground for political power play. Despite all of this, she still believed that a happy future was awaiting her. When she formally marries into the Kujo clan, she will lose her title as daughter of the Hiragi clan, her position in the Kanjo Commission, and above all, her independence. डिमोनेटाइज क्यों हुआ? क्या पता है तुमको अपना दुख भाई, रहने दो. Easier said than done. The perpetrators are manipulating everything from the shadows, letting unsuspecting pawns do their work. This is what makes their approach so smart. We, meanwhile, are out in the open. If we attempt to stop this wedding from happening, we will become the villains of the story and face immense public backlash. So what are we gonna do? At this stage, if the perpetrators wish to maintain control over the situation, their only option is to come out from the shadows and bear their fangs. I will wait for that moment to arrive. First things first, we must go and rescue Shinojo. He has done nothing wrong and does not deserve to be punished. Tell me where Shinojo is. We'll head off right now. भाई अब माइनक्राफ्ट के स्ट्रीम कभी करोगे क्या? और माइनक्राफ्ट के यहाँ सोच तो रहे हैं करने का, सोच तो रहे सुबह में माइनक्राफ्ट खेलेंगे, शाम में जेंशन खेलेंगे, ऐसा ठीक रहेगा? सुबह में 2-3 घंटा माइनक्राफ्ट, फिर शाम में 2-3 घंटा ये जेंशन. मेन ये है, टाइम का दिक्कत हो जा रहा है थोड़ा, टाइम का हो जाना. Quietly now. Here comes the catch. Sakura swirl. I cannot match my bravery. Be still. Withdraw. Blast. Let's go. We must report to Master right away. Hey, get back here! No need to follow them. We need bait to catch the fish anyway. Leave them be. I think I saw a key fall to the ground during the fight. Let's free Shinojo first. But virgin वही तो क्या नहीं it must have भाई. been kicked to one side. भाई ये क्या क्वेश्चन है? What the? It's a tanuki? Oh, don't tell Paimon that the tanuki took it! Let's follow it and see. मतलब भाई आपने क्या हुआ है? क्या मतलब? हाँ भाई मैंने किया हुआ है. हाँ जिसने भी आज तक किया है ये इमोट लगाओ, जिसने नहीं किया वो ये लगाओ.
हाँ मेरा लगा लो वही वाला इमोट फास्ट वाला कुछ करना है Oh, thank the gods you're here. Please help me. कैसे इसका हेल्प करे भाई यहाँ पे तो चाबी मिल ही नहीं रहा Oh, thank the god. Thank you. Thank you. मेरे जेब्स की इसमें everything I It was terrifying. They said they were going to throw the अच्छा cage भाई into the sea with me still inside. Oh, wait. You have to listen to me. Lady Chisato's wedding. It's all part of a scheme. Someone's trying to use the wedding for their own ends. Calm down, Shinojo. It's okay. We know about all that. Huh? Our suspicions were roused to this possibility, and so far, everything is unfolding rather as we expected. Those behind this plan are not going to give up easily. Their next move is imminent. We must devise sufficient countermeasures. Yashiro Commissioner, you're personally going to take action? This situation has consequences for the whole Tri-Commission, and the stability of all Inazuma is at stake. My hitherto neutral stance ends now. The almighty Shogun has always despised these pathetic power games. As a commissioner, I am a servant of the Shogun, and it is therefore my duty to handle these tiresome matters on her behalf. That's true. Shinojo, don't return to your post yet. Find somewhere safe and stay hidden. Traveler, Paimon, let's get out of here. Well, if it isn't the Yashiro Commissioner. I hear you showed up here with no explanation and attacked my men. You wouldn't happen to be carrying out some sort of secret mission, now would you? I heard that someone was taking the law into their own hands. As a responsible official of Inazuma, I could not in good conscience stand idly by. Shinojo may be your retainer, but the law does not grant you the right to abuse him. Abuse? Nonsense. I was just teaching him a lesson. Out of nowhere, a low-ranking officer decides to barge in on Lady Hiragi and start spouting out the most absurd and insulting nonsense one can imagine. A truly egregious loss of decorum. I dare say, the poor lady was terrified. So, you're saying that you know absolutely nothing of the reasons for his actions? Because otherwise, why would you describe it as out of nowhere? Two people from two different clans are getting married. That's all there is to it. And yet this young gentleman took it upon himself to fabricate a nonsensical disaster story around it. How should I know what he was thinking? Even if she marries into the Kujo clan, Lady Hiragi will always be the daughter of the Hiragi clan and the most distinguished member of the Konjo Commission. We are, and always will be, her loyal assistants. It's our duty to see that she never has to worry about anything. Loyalty and duty are our guiding principles. Not only did this guard show no regard for either, he went out of his way to upset our lady. How could one do such a thing? Even if we put it down to a rare moment of impulsivity. I have to say, I'm surprised to see one of such noble standing as yourself rushing to his defense. Darn it! This guy is good. Annoyingly good.
Funny. I'm suddenly reminded of an anecdote I'd like to share with you. There's not been a dull moment since I took up my post in the Yashiro Commission. Every day I've been exposed to new and fascinating things. For instance, a merchant from abroad once told me about a curious kind of bird with the most extraordinarily long tongue. So long, in fact, that you can tie 2 knots in the portion of it that extends out of its beak. I'm sure someone as erudite as yourself could be able to guess what people do with these unusual avians. Keep them as pets. You'd think, wouldn't you? But there's a catch. You see, this bird is of no use to humans whatsoever, and certainly doesn't make a suitable pet. If you catch one, the best thing you can do is actually cut its tongue off and throw it out of the window. The reason they give is this. The longest tongue has the most to say, but don't be deceived as it chirps away, lest the song it sings lead you astray. I say, Yashiro Commissioner, are you here simply to mock the Kanjo Commission? Far from it. In my mind, the Kanjo Commission is made up of honorable individuals, upright and forthright, conscientious and loyal. It is unbecoming of such people to resort to lies, deception, and filibustering, all as part of a plan to remove Lady Hiragi from her position in the Kanjo Commission. Yashiro Commissioner, please don't make accusations without any evidence. The evidence is standing right in front of me, is it not? I have a credible witness who can confirm you were quick to try and make him disappear as soon as he said something that you did not like. Ugh, dear me. I can't believe the Grand Matsura clan is now represented by someone with less of a sense of loyalty than even an ordinary servant. You studied hard and took a government position, only to make it to where you are now just to play these petty power games behind the scenes. I'm not sure whether it's because you're smart enough to play the system, or too foolish to know any better. In your years of service to the Shogun, not only have you managed to glean nothing good from the people around you, you have also let yourself be blinded by self-interest. And now you have ruined your once bright future. I'm not angry, Mr. Matsura. I just feel sorry for you. Is that right? Then tell me, if you're so bright, what exactly do you think you can do to me? This is at most a Kanjo Commission issue. We'll handle this amongst ourselves. You are reaching rather outside of your bounds, Yashiro Commissioner. If you seek to involve yourself in other clans' affairs, might I be so bold then as to question your motives in doing so? I think you are simply opposed to an alliance between the Kanjo Commission and Tenryo Commission, because the new balance of power in the Tri-Commission would be a threat to you personally. So you come here with an elaborate excuse to try and break up this marriage. So, that's how you view it. Well, I have to admit, you clearly are far more talented than I at monitoring the power balance within the Tri-Commission. Let me be crystal clear. This wedding is going to happen, and nothing is going to change that. The notices have already been sent out. All of Inazuma City knows about it now. Most of the public weren't aware that Kujo Kamaji and Hiragi Chisato were courting. But you can bet it's all anybody's talking about now. Once the notices go out, that's it. The wedding is a sure thing, even if it hasn't happened just yet. I see. It seems like I was wrong. So suddenly we see eye to eye? I had expected you to at least be smarter than most. But it seems that I was gravely mistaken. Kamisato Ayato! You! How dare you! You've made your move. Now, I suppose it's time I made mine. What do you mean? Do you seriously think this marriage will bring the Kanjo Commission and the Tenryo Commission together? Isn't it at all possible that the Kanjo Commission becomes marginalized as a consequence of this union? Goodness me.
Well, I've learned a great deal from talking to you. That will be all for now. If you would excuse me, I shall take my leave. Hey! Hey! What was all that? Paimon didn't follow at all. They had their scheme, but fortunately I was prepared. As I said, they ended up coming out from the shadows and revealing themselves. Let's see how things are in Inazuma City. Then, I'll take you through the details of my plan. Look at this. The daughter of the Kanjo Commission's Hiragi clan and the master of the Tenryou Commission's Kujo clan are getting married. Sounds like an all-around perfect match, don't you think? For sure. I'm just surprised. It seems very sudden. I hadn't heard a single word about it until now. Good luck to them, I say. I'm sure it must have been a hard decision. Looks like the wedding is definitely going ahead. It's still too early. But only if Kujo Kamachi is willing to help us. Welcome. I just heard that the news of my wedding has been officially announced. It seems so sudden. I wasn't ready yet. Yeah, about that. It's kinda complicated. I see. So someone's trying to take advantage of our marriage. If you proceed with the wedding, the repercussions for you are likely to be minimal. But we must take Lady Hiragi's situation into consideration. I've previously considered this possibility. But in the end, we're getting married for true love. And I've promised her that I'll do everything in my power to protect her. I understand where you're coming from, but to be frank, she should not need your protection. Or, to put it another way, you have tacitly admitted that Lady Hiragi will need your help to get through the hard times ahead, which perhaps suggests that, deep down, you realize all she stands to lose. I don't mean to criticize you. It is natural to want to protect our loved ones. You're an intelligent and gentle person, and I'm sure you would have been able to think about this more objectively were you not so emotionally involved in the situation. I'm sure you admire Lady Hiragi for being the independent, gentle, resilient, and strong-willed person she is. For the sake of marrying you, this wonderful woman will become someone who has to depend on you for the rest of her life. Are you really okay with that? I love her with all my heart, and would do anything to make her happy. That's why I cannot abide to see her suffer or be manipulated by other people. Yashiro, Commissioner, you're right. It was naive and selfish of me to take things this far. But it's too late now, isn't it? There are notices everywhere. I have a plan, but it needs a villain. Sir Kujo, in order for my plan to work, you and I must both play the role of antagonists. But it is not without its risks. Are you willing to help? If there's a way to salvage this, then let's hear it. I've told the people at the Kanjo Commission that the marriage isn't going to unify the Kanjo Commission and the Tenryou Commission. On the contrary, it's a terrible idea that will marginalize the Kanjo Commission. The context for this is that they are planning to use this marriage to bring down the Hiragi clan. And the key to their success is coming up against no resistance to the marriage from the Tenryou Commission. But what if we were to imagine for a moment that since the affairs of the Vision Hunt Decree, the Tenryou Commission has been planning to make a move against the weakened Kanjo Commission? The only reason you have been hesitant to act since taking over the Tenryou Commission is because you care about Lady Hiragi's feelings. And so, your plan is to liaise with the Yashiro Commission, to marry her and bring her out of the Kanjo Commission as soon as possible. Once that is achieved,
As the person in charge of the Tenryou Commission, you no longer have any reason to hesitate. I see. This is an ingenious plan. It takes advantage of the situation perfectly. Exactly. Our purpose is to change Lady Hiragi's position from an unnecessary burden to an indispensable asset. By doing so, we can even strengthen her position in the Kanjo Commission. Once our adversaries realize how the network of connections behind the scenes really looks, they'll do their utmost to stop this wedding from happening. Then, we simply leave them to clear up the mess they've created. Got it. So the network of connections? This is all way too complicated for Paimon. Can you just tell us what you need us to do? We have to make sure that the behind-the-scenes story comes to the attention of our dear friends in the Kanjo Commission. Matsura, with whom I spoke earlier, will now be fearing the worst. No doubt he'll be on the lookout for the first sign of a crisis. In that case, he will almost certainly have placed informants throughout Inazuma City. What we need to do is to use these informants as a breeding ground for our fake intel. Sir Kujo, there are certain things that I need you to attend to personally. It's almost time. My ninja has located one of the informants. Let's go and see if he'll take the bait. That person is one of Matsura's informants. Let's follow him. Be careful not to get seen. Did you see that? Sir Kujo Kamaji just came past here with a huge group of people. Could it be related to the wedding announcement?
Maybe, but from the look on his face, it seems like something much more serious. He and his men seem pretty intense at the moment. Isn't it all a bit excessive for a wedding? The Tenryou Commission has sent a load of people to Rito. I guess it must have something to do with the wedding. I think in all there must have been about 100 people so far. That doesn't sound good. What could be going on? I hope it's just Sir Kujo Kamaji being overcautious. The news is spreading fast, but it appears Master's fears may be well placed. There's no way they sent this many people just to escort the bride. I have to investigate. As expected. Let's follow him. Huh? Wait. That person is one of Matsura's informant. Let's follow him. That person is one of Matsura. Let's follow him. Did you see that? Sir Kujo Kamaji just came past here with a huge group of people. Could it be related to the wedding announcement? Maybe, but from the look on his face, it seems like something much more serious. He and his men seem pretty intense at the moment. Isn't it all a bit excessive for a wedding? The Tenryou Commission has sent a load of people to Rito. I guess it must have something to do with the wedding. I think in all there must have been about 100 people so far. That doesn't sound good. What could be going on? I hope it's just Sir Kujo Kamaji being overcautious. The news is spreading fast, but it appears Master's fears may be well placed. There's no way they sent this many people just to escort the bride. अबे यार खड़ा हो तो देख ही लेता है बैठो तो भाग ही जा रहा है. That person is one of. Let's follow him. Did you see that? Sir Kujo Kamaji just came past here with a huge group of people. Could it be related to the wedding announcement? Maybe, but from the look on his face, it seems like something much more serious. He and his men seem pretty intense at the moment. Isn't it all a bit excessive for a wedding?
The Tenryou Commission has sent a load of people to Rito. I guess it must have something to do with the wedding. I think in all there must have been about 100 people so far. That doesn't sound good. What could be going on? I hope it's just Sir Kujo Kamaji being overcautious. The news is spreading fast, but it appears Master's fears may be well placed. There's no way they sent this many people just to escort the bride. I have to investigate. He ran off! As expected. Let's follow him. Wow! It's like the whole Tenryou Commission is here. Excuse me, has something happened on this road? I'm a businessman passing through, and it's a little disconcerting to see this place so heavily guarded. Ah, please don't be alarmed. As I'm sure you've heard, the wedding of Sir Kujo Kamaji and Lady Hiragi Chisato will take place any day now. Sir Kujo decided to send for Lady Hiragi ahead of time, and have her live in Inazuma City during the run-up to the wedding. I see. We are here to clear the way for Lady Hiragi. Not just us, either. You'll see more Tenryou Commission members as you go further along. We're all here for the same duty. Isn't this a little excessive? Sir Kujo holds Lady Hiragi in the highest regard, and wants to treat her with the utmost respect, from beginning to end. I understand. Sorry to disturb your work. Drat. It's exactly as Master feared. They say they're here to guard the road, but really they're poised to attack if Master doesn't allow Lady Hiragi to leave Rito. Wait, no. If Lady Hiragi does leave, they'll have all the more reason to strike. But we're in no state to defend against a Tenryou Commission attack. I must tell Master right away. He ran off again! That should do it. The seeds have been sown. In this atmosphere, mounting suspicion will nurture fear among the Kangjo Commission. Now, we wait patiently for it to grow and ferment. The calm before the storm is always the part that unsettles people the most. Are they really gonna own up and apologize, just like that? If you're curious to find out, you can visit the Hiragi clan in Rito in a couple of days. I have some other business to attend to, so I won't be spending any more time on this situation. In any case, we've made our move. This is not my first time. Well then, goodbye for now. I truly hope that things will work out in Hiragi Chisato's best interests. He left kind of abruptly. Are things really gonna turn out like he predicted? Paimon too. Well, let's go to Rito again in 2 days. Please. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. These people from the Tenryou Commission have been here for days now. I guess they're here to pick up Lady Hiragi. But why would it be taking so long? I heard that the Kangjo Commission suddenly said they don't want Lady Hiragi to leave. To be honest, I'd be hesitant if I were her. A crowd this size comes to Rito?
Who knows what they could be planning? Shh, stay quiet. Someone might hear you. Oh, right. Sorry. How did things get to this point? Hello. How may I help? We arrived here 2 days ago to escort Lady Hiragi to Inazuma City. Sir Kujo Kamaji gave us very strict orders, so we have to obey. But every time we attempt to receive the bride, the Hiragi clan always finds an excuse to delay things. Since we haven't fulfilled our duties yet, we decided to stay in Rito until Lady Hiragi is ready to come with us. We apologize. It was not our intention to stay here so long. We promise our presence here will not impact ordinary people's lives. We can only hope that the leaders of the Hiragi clan will start to cooperate soon. If this stalemate continues, who knows? Sir Kujo might give us orders to be less accommodating. How much longer does your master plan to hold them off? I have no idea. We're stuck in limbo here. Master's been very on edge these past few days. He gets irate over the smallest things, and is suspicious of everything. He's been yelling at me a lot. I understand that he's anxious, but I mean, what can we do? I've told him before, never cross the Yashiro Commissioner. Yeah, good advice. With him, you just know that whatever he's doing, a lot of preparation has gone into it. If Lady Hiragi is really taken away, then what will the Tenryou Commission do? And what will the Yashiro Commission do? Maybe we should tell Master to discuss things with Lady Hiragi. Hiragi Chisato is now at the center of... By now, the Kanjo Commission probably knows how important she is. But what about what she thinks? Oh, Traveler! I assume you've heard about everything that's been going on out there. What on earth is happening? Don't worry, we can explain everything. So, what happened was... After the Tenryou Commission arrived, they suddenly became alarmed. They keep having secretive discussions and won't allow me to have any direct contact with the Tenryou Commission. I never would have thought that this was Sir Kamisato's plan. I'm sorry. I haven't. Maybe there's no right or wrong decision. Maybe everything would be easier if I simply didn't have the choice. I used to tell myself things like this to avoid having to think about it. But once I saw the notices appearing out of nowhere on the streets, signaling that the wedding was confirmed, I didn't feel reassured at all. Instead, I felt a great sense of regret. I keep thinking back to what Sir Kamisato said. This, I can happily accept that if someone was trying to take advantage of my marriage, I should absolutely refuse to go through with it. But that's not the answer I'm looking for. And also, now that things have escalated to this point, it will be tricky to resolve. Ah, Lady Hiragi, here you are. You scared me for a second. I thought you'd gone missing. You... Wait, you're the ones who were with the Yashiro Commissioner that day. What do you think you're doing here? Are you trying to convince Lady Hiragi to leave? Calm down. They're my friends. They're just here to visit me. Friends? Are you sure? Just friends? Lady Hiragi, I told you already, these are exceptional circumstances. You need to be more vigilant in everything you do. You are extremely important to us and to the entire Kanjo Commission. Who's to say they don't have a hidden agenda? If you want to accuse us of trying to abduct her, just come out and say it! Don't be rude. You've been very highly strung lately, seeing everything as a threat. I... Listen to me.
I know all the ins and outs of Yo, everything Super that's bro, happened what's so up, far. bro? What's up? Her arrival might well be your very last chance to fix this. कितना रहता है भाई सुपर आर्क आजकल तो? The present state of affairs in Rito shows me that the situation has escalated well past the point where you could hope to control it. If this deadlock continues any longer, we will have nothing to gain and much to lose. This is not an order. All I need you to do is give me an explanation and take responsibility for the situation. Understood, my lady. I shall discuss with the others right away. Good job, Chisato. You handled that well. I was so nervous. But I thought things are now so critical that I should at least give it a try. ये किसके quest है? आयातो. Well. Yes, well, let's Fontaine का करेंगे अब कुछ दिन में. हाँ, provide a conquest start. satisfactory response. We had a serious discussion and reflected on our mistakes. In all honesty, no one can handle the weight of the situation here. Everyone is besides themselves with worry. It'll drive us mad if it continues any longer. I'm so sorry. My actions were radical and duplicitous. I was selfish and ignored the greater good. And then I left the situation to fester. Would you please give us a second chance? For my lady's sake, please give the Conjo Commission another chance. I suppose you're right. The only person who can change the Tenryou Commission's mind will be the Yashiro Commissioner. We'll head off to the Kamisato estate shortly and beseech him to help us with the utmost sincerity. Lady Hiragi, might I ask you to join us? You are the most important person. Without you, we have no other way. By the way, aren't you a good friend of the Yashiro Commissioner? Please put in some good words for me. Yashiro Commissioner, I'm sure you've heard the news. The Tenryou Commission has now occupied Rito, refusing to leave until we hand Lady Hiragi over to them. I realize I have greatly offended you with my atrocious actions, and I realize also that this must sound like the very height of absurdity. But please, have mercy, good sir. I'm sorry, Mr. Matsura. I'm exceptionally busy and have but a moment to spare before my next engagement. I fear this leaves no time for small talk. So, please, if you would be so kind, get straight to the point. I know our apology means nothing to you, but we really have nothing else left to offer by this point. I'm terribly sorry. Everyone in the entire Conjo Commission now realizes the gravity of this situation. Lady Hiragi is indispensable to us. We promise to always support her. So, would it be at all possible for you to talk to Sir Kujo once more, on our behalf? You make it sound so easy. The Tri-Commission will be ridiculed by the public if we choose to withdraw the notices now and eat our words. What do you plan to do about this? To lose face for the Tri-Commission is to bring shame to Her Excellency. Are you and your associates ready to face the thunderous wrath of the almighty Shogun? We'll take full responsibility. We'll publish a new notice and hold a conference to explain the situation. We will make sure that the public knows this was all a huge misunderstanding. We'll do everything we can to minimize the impact. Everything we can. Master Matsura, you should have known it would come to this. Whatever were you thinking? But the Tri-Commission must always put the interests of Inazuma first, regardless of what Sir Kujo and I may feel at this present moment.
If the situation in Rito is left to fester any further, things may get out of control. But Lady Hiragi and the inhabitants of Rito are innocent. If we fail to contain the situation promptly, the rumor mill will wreak havoc on the Tri-Commission's reputation. Try keeping a pet bird. You'll see what I mean. Songbirds who know how to hold a tune can be very pleasant to listen to, but they can also become irritating if they don't know when to stop. And as for the ones with excessively long tongues, well, they're so insufferable that they can't be kept as pets at all. But it doesn't take a moment to cut out their tongues and silence them for good. Yes, I understand. I've listened to your concerns, and I'll talk to Sir Kujo for you. But I can't guarantee that he will change his mind. I understand. Thank you for your help, Yashiro Commissioner. All right, you ought to return now. I'm sure you have a sizable mess to deal with back in the Kanjo Commission. Okay, then please excuse me. Thank you once again, Commissioner. Ah, yes, Lady Hiragi. I have something to tell you. Would you mind? Oh? Why, of course. Sir Kamisato, you became a completely different person just now. It felt so intense. Unruly servants like him need to be severely reprimanded. As a commissioner, the almighty Shogun trusts me to do her will. I did as I should. But now, I'd like to take off my commissioner hat and share a personal story with you. Oh, please. I'd love to hear it. You must have heard that the Kamisato clan once went through an extremely difficult period. My father worked incredibly hard to compensate for the grave errors made by the Kamisato clan long ago and restore our reputation. The work took a toll on his health and ultimately led to his untimely demise. My mother loved him dearly. She passed soon after. This sudden turn of events dealt a heavy blow to the Yashiro Commission. Behind the scenes, things became very unstable. Everyone thought that the Kamisato clan had lost power. That made my sister and me nothing but burdens hindering the ambitions of others. It may sound preposterous now, but I assure you that is the truth of what the Yashiro Commission has been through. Huh. Pretty similar to how the Kanjo Commission is now. Back then, I had no choice but to accept the position I was in. While I desperately looked around for powerful supporters, I endured smear campaigns and attempts to exploit me. I had no other choice. I had to honor my parents' dying wishes, and I also had a young sister to take care of. I didn't mind what became of me, but my family. No one can ever be allowed to trample over my precious family. Fortunately, I persisted, and the Kamisato clan was able to survive the storm. I think I now know where my sense of loss and confusion was coming from. Shinojo once told me that he saw what was in me in a way that no one else did. Bro. That's why he couldn't bear to see me live the rest of my life depending on someone else. I thought the reason I felt unsettled was because of uncertainty over getting married. But the fact is, it's because I felt too young and inexperienced to handle the situation facing me. The reason why Sir Kujo was able to face the prospect of marriage so confidently is because he's prepared for anything. That's it. The situation I'm facing now Quality is the अच्छा लग same रहा है क्या one bro? we faced back then. I am random gamer. Yes, I can say. अरे random gamer भाई इतने time बाद अरे इधर थे भाई इतने time तो तुम यार. Second channel है तुम्हारा slang gamer. Well said. I'm sure once you have grown and gained confidence, इतने time बाद आया यार लगता है सालों एक दो साल बाद आए to live the rest of your life. It might not sound exciting, but this kind of personal growth is a necessary step in the pursuit of true happiness. किस पर खेल रहे हो? Guess करो किस पर खेल रहे हो सकते हैं. I will use this as an opportunity to take over the responsibilities of the Hiragi clan. I'll think about marriage again after everything is more settled. This puts less pressure on Kamaji,
and means I can support and protect myself without having to worry about becoming a burden or dependent on someone else. My best wishes to both of you were and remain heartfelt. When the time comes for the wedding to go ahead, I will come to congratulate you once more. Thank you, नहीं आता रहता Sakami-sato. हूँ chat I am grateful करता for नहीं everything you have shared with chat me. नहीं करते Now, iPhone if है you'll excuse me, iPhone पर तो I पहले have a किए lot थे to deal with stream back home. Take care, Lady Hiragi. I'm confident that on your return, iPhone you will ना find your iPhone से भी Conjo Commission 1080p associates 60 FPS most stream हो receptive तो to your जाता है instruction. गेम भी हाई In ग्राफिक्स में fact, my चल जाता recent है experience suggests the same. लेकिन Thank कुछ you टाइम once बाद again. लैग करने लग जाता है गेम गर्म हो जाने के बाद फोन PS4 थोड़ा सा गैस सही किया बस नंबर थोड़ा गलत बोल दिए Hats off to you too, sir. Everyone नहीं thought there Xbox was तो no नहीं way है out until you pulled that PS super तक तो smart सही बोले बस strategy out नंबर of थोड़ा गलत nowhere. बोल दिया In fact, counter-checking is a perfectly common maneuver in the game of chess. Our rival this time was easy to deal with. He was smart, but short-sighted, and sloppy in his execution. This outcome is entirely within my expectation. अब जाकर करेक्ट बोले भाई PS5 ही है Anyway, it's kind of a relief to see that Chisato has decided to set the Hiragi clan straight. I agree. Stability in Ina's... Well, the fact is that I am first and foremost the Yashiro Commissioner. Perhaps for Master Matsura, power is his life's pursuit. But for me, nothing matters more than the stability of Inazuma. A stable nation is the prerequisite for a stable Yashiro Commission. Only then can the Kamisato clan and the other Yashiro Commission clans have a peaceful existence. But human desire will always be a factor in the equation. 5799 This is only. not the first situation of its kind, nor will it be the last. All I have tried to do is make sure the three parties to the Tri-Commission serve to restrain each other. Stasis is not the... Another positive outcome is that everyone recognizes how important Lady Hiragi is now. I think I did her a sizable favor in that regard. Dealing with the Hiragi clan will be much easier for her than navigating a new and unfamiliar one. There were so many things at play over this one wedding. Wait a second. You were PC games कैसा खेलोगे फिर PC games नहीं खेल पाएंगे कंट्रोलर बड़ा ही जो games है I thought straight away it was bad timing. खेलना पड़ेगा Nevertheless, everything I said to PC Hiragi games Chisato तो नहीं was खेल entirely पाएंगे sincere. ये If you जैसे choose to give Genshin है up ये your stance on सारे something प्लेटफॉर्म once, पे है तो इस पर भी you'll है be तो इस having पर to भी खेल compromise लेते for हैं the rest of your life. I didn't want to see her suffer because she didn't realize what she was getting into. Now, she has the chance to become her own person. Let's see who she becomes. Okay then. Guess we'll have to wait and see. All right. Farewell, and profuse thanks to you both. I shall have to host you at the Kamisato estate when my sister is next available. Looks like everything's resolved. Masterfully अभी done. फिर Everything was console game perfect. Well, except for console one gamer minor बन गए detail. I somehow हाँ ended फिलहाल up के with a glass लिए of very peculiar tasting milk. PC का भी देखो लगे हुए हैं Didn't you भाई like PC का गेम का I अलग बात है distinctly भाई remember PC you का saying गेम you are तो भी quite लगे हुए partial हैं to देखो exotic क्या होता है flavors. Oh, my lord. The Traveler had one of those as well. I'm sure she's made a great impression on you. The Traveler did indeed play a critical role in this case. I'm sure both families would have been more guarded against me had she and her companion not been present. It wouldn't have been so easy to get to the heart of the matter. There you go again, my lord. Placing the focus on other people while discreetly performing your job to perfection. Naturally. Ah, yes. Now that we're both free, let's finish off that game of chess we started a few days ago. Yo. और हम लोग कहाँ आ गए खत्म हो गया क्या लेकिन कुछ ऐसा कटसीन नहीं दिखाया मस्त सा खत्म भी हो गया भाई आयातों का छोटा था क्वेस्ट और कुछ ऐसा दिखाया भी नहीं स्टोरी क्वेस्ट
अरे भाई तो कमीशन है, कमीशन नहीं करना ना। नहीं कमीशन तो अलग है, कमीशन ये है वर्ल्ड कस्ट ही। हाँ जी रिदम माइक फुल लाइट हियर द होल पैकेज गोइंग बॉटम। The wind knows me. Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Game's up. Fun's over. One with nature. Fallen leaves, adorn my night! It's fine. The wind knows me. My apologies! Busted! Everybody stand back! Here comes the catch. Embrace the ice! Whirling snow! Yeah!
क्या हुआ मेरा माउजू को? The birds come! Take flight! One with nature! Time to go! Into the wind. Time to go. Let me amuse myself. Gotcha. The more, the merrier. Just once more. Busted. One with nature. Wind Strider. Time to go. As one with wind and cloud. Adventure time. Teamwork is dreamwork. Quietly now. Things are about to get dicey. Sakura swirl! My apologies. You need to hurry up. Into the wind. You need to hurry up. Game's up. Fun's over.
This one's well done. Whirling step. नहीं स्ट्रीम करो Everybody stand back. My apologies. Take flight. भागते भाग हेल्थ कम कर दे रहा है भाई
भागते भागते में मर गए। Off we go. उसको रोटेट क्यों नहीं कर पा रहे? Adventure time. Off we go. The wind knows me. अब यही तो दिक्कत है थोड़ा पहुंच के गिर गया। Into the wind. One with nature. पहुंच के गिर गया था भाई। चलो फाइनल सील ब्रेक कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा, राइज करना पड़ेगा। चाहिए बचाओ। Time to go. एक सेट कर रहे हैं तो एक खड़ा हो जा रहा है, ऐसे क्यों? कुछ तो दिक्कत है इधर। Adventure time. Off we go. Adventure time. Clouds high. The birds call. Teamwork is dreamwork. Shoot. My apologies. Yeah. Take flight. Into the wind. Off we go. Couldn't break the curse.
with nature. This is the end. Kamisato art. Sometsu. Whirling snow. My apologies. Yeah. Much remains unfinished. Oof, भाई. इन्वेंटरी कैसे खोलें? इन्वेंटरी इधर है ही नहीं भाई. फूड किधर है? चलो हेल्थ बढ़ाने वाला लाओ कुछ. What a drag. Whirling snow. भाई पार्टी भी चेंज नहीं कर सकते अभी तो. सब कैरेक्टर तो मेरा मर गया. उसको रिवाइव भी नहीं कर सकते. Take it easy. अब यही सब जो स्कैम होता है मेरे साथ भाई. क्या है?
लड़का बना हुआ है, लड़का बना हुआ है, लड़का बना हुआ है, सब तो बना हुआ है भाई, सब तो बना हुआ है। चलो फिर फाइट करने दो। इधर तो सेट है। Take it easy. पार्टी सेटअप चेंज करोगे, अपना वाला टीम लाने दो। I await your instruction. Stabilize! Yeah! Take flight! Sakura swirl! My apologies! Ha! 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 Yeah!
Hi bro, hello One Piece bro, welcome to stream. Gather. Yugley, you're up. Fire hazard. Solidify! Whirling snow! Can you come to my world? I need help. I am new to game. Arey, of course I can come. Just send me friend request. देख लो UID मेरा नीचे में. भाई साहब कटसीन चल रहा है इधर तो. तुम भेज दो ना भाई फ्रेंड रिक्वेस्ट. हम PS पे हैं, थोड़ा टाइप करने में दिक्कत होता है. तुम भेज दो ना फ्रेंड रिक्वेस्ट. अभी थोड़ा हमको 2-3 मिनट लगेगा ये करने में. तुम भेज दो, डायरेक्ट तुम्हारा एक्सेप्ट करके तुमको रिक्वेस्ट कर देते हैं. ठीक है भाई. आई डोंट नो हाउ. अच्छा तुमको नहीं पता. ठीक है कोई दिक्कत नहीं. रुक जाओ, हम ही कर देते हैं. चलो आते हैं तुम्हारे वर्ल्ड में. ये बस थोड़ा सा बच्चा है शायद. बस इससे यहाँ पे बात कर लेंगे और ये क्वेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर तुरंत आ जाते हैं. ठीक है. Are you playing on console? Yeah, bro. कितना बात करना है यार अभी. यार इसका बात अभी तक खत्म नहीं हुआ है. Then tell me how to send. देखो तुमको सबसे पहले सेटिंग्स में आ जाना है. सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ फ्रेंड्स में आओगे. ठीक है. फिर फ्रेंड्स में यहाँ तुमको ऐड फ्रेंड का ऑप्शन होगा. यहाँ पे मेरा UID डाल दो. हाँ भेज दो. तो तक इससे बात कर लेता हूँ.
रिक्वेस्ट इज सेंड कम आफ्टर कंप्लीटिंग रिक्वेस्ट। ठीक है ब्रो, हो ही गया शायद। नहीं लुक, अच्छा 2 कुछ चीज़ ऐसे खोजना है यहाँ पे, इन दोनों चीज़ों को खोज कर आते हैं, फिर तुम्हारा आराम से तुम जितना देर चाहो उतना देर तुम्हारा कर देंगे, है ना। इसको जल्दी से बस कर लेते हैं कंप्लीट। बीच में छोड़ते हैं ना फिर खोजने में दिक्कत हो जाता है, मिलता नहीं जल्दी से। Stabilize. Solidify! The inside फाइट अवॉइड ही करते हैं भाई, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना। चलो फाइट जो है अवॉइड करो अभी, फटाफट कंप्लीट करो। You take your time. Where are you from? I am from Bihar, India. नहीं नहीं नहीं, विश क्यों हो गया यार। बैक कर रहे थे भाई, इधर सेव कर रहे हैं, इधर विश हो जा रहा है गलती से। अच्छा हुआ एक ही विश हुआ भाई, 10 नहीं हुआ, मेरा तो दिन ही बन जाता। अच्छा ये पानी वाला क्वेस्ट इसी का था। ओ भाई कटसीन।
इसे शायद कहीं और जा सकते हैं ना। अच्छा ये जगह खुल गया। हाँ ये कोई सा जगह है जो इसके अंदर है। चलो भाई फाइनली एक और जगह खुल गया। जैसे खैज़म था ना इसी तरह से ये भी एक जगह है खैज़म जैसा ही। ओ भाई पानी में गिरे भाई सीधा। आई फ्रॉम साउथ इंडिया। फ्रॉम साउथ इंडिया भाई। इंडिया ही है भाई। साउथ वेस्ट ईस्ट वेस्ट क्या भाई सब तो इंडिया ही है। जाना किधर है? ऊपर जाना पड़ेगा ऊपर जाना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेट और लोअर में और लोअर है क्या? इसका क्या लोअर होगा? और हायर जाना होगा। भाई कहाँ गिर गए भाई? इधर तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुछ लोअर बोल रहा है कभी हायर बोल रहा है। पार्टी सेटअप थोड़ा चेंज करा जाए। वंडरर को लाया जाए। वंडरर किधर है? वंडरर का थीम। अच्छा वंडरर किसमें से हटा दिया था ना। वंडरर को ऐड करके डिप्लॉय करो। What do you want from me? I want you to fly. Help me to go above, bro, wanderer, bro. अच्छा रुको 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 एक तो जगह दिखा हमको। ये देखो इधर इधर है जगह भाई। इधर है जगह। बताओ फालतू कितना दिमाग लगा रहे थे। इधर है जगह। अब ये जगह एक्सप्लोर करना होगा हमको है ना। ये देख रहे हो भाई कुछ भी नहीं खुला हुआ इधर। कैन यू डिफीट बॉस? यस यस आई कैन डिफीट। रुको मैं आ रहा हूँ। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मैं पहले तुम्हारे में आ जाता हूँ। मैं तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ पहले है ना। फ्रेंड्स वेयर इज माई फ्रेंड माई न्यू फ्रेंड वरुण। वरुण माई फ्रेंड। अरे वुल्फ ये सब तो आराम से मार देंगे भाई। आप भी रुको आता हूँ मैं। किधर वरुण? लो रिक्वेस्ट कर दिया आ जाओ। चलो वुल्फ को मारते हैं। एक्सेप्ट करो भाई। एक्सेप्ट नहीं कर रहे भाई तुम। चलो वुल्फ को मारते हैं। आ जाओ। वुल्फ इधर है। तुम तो अभी तक लगता है मारे नहीं हो वुल्फ को। पहले बार तुमको खुद अकेले ही मारना पड़ेगा शायद। फिर हम लोग आकर मार सकते हैं या नहीं कर सकते हेल्प। चलो चलो आ जा। आ जाओ वुल्फ के पास। Quit following me.
आजा। I haven't even touched that. कोई बात नहीं, आओ स्टार्ट करो फिर। मैं तो हूँ ही। Fireworks are gonna get soaked. Let's find shelter quick. We're not going to make it. आजा, हेल्प करने में कोई दिक्कत की बात नहीं। और किसी को भी हेल्प चाहिए बस बोलो भाई। तैयार। This is order. Time for a light show. Solidified. Fire hazard. और बता भाई, और किसको मारना है? और कौन सा बॉस मारना है बोलो। शेल्डी को चलो उसको ही मार देते। इनवाइट मारो। इनवाइट मारो। ये सब को तो बच्चा जैसा मारता है भाई। शेल्डी वेल्डी कुछ बच्चा। चलो मैक्स पे स्टार्ट करो भाई। 1 पे क्यों कर रहे हो? शेल्डी को किससे हराएं? इसका तो और भी इजी होगा ना। चलो रेडी कर देते हैं। हटाओ क्या दिक्कत है, इसे हरा देते हैं। चाइल्डी को तो आयाका भी इसके हरा देगी आराम से। This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. Not bad. You've got a trick or two. All you do is run. I can't defeat him. Fire hazard! Brace you! और बताओ भाई, और किसको हराना है? इट इज सेइंग वीकली ट्रेजर लिमिट। हाँ एक ही बार मार सकते हो वीक में। ये वीकली प्रोसेस है, हर वीक एक बार इसको मतलब
मार तो बहुत कर सकते हो, लेकिन इसका जो मटेरियल्स है ना वो एक बार ही कलेक्ट कर सकते हो। ये हर मंडे को रीसेट होता है, हर मंडे टू मंडे तुम एक और मार सकते हो। मंडे टू मंडे नहीं, मतलब मंडे से सैटरडे संडे तक में एक बार मार सकते हो, मतलब हर वीक, समझ गए ना, हर वीक एक बार मार सकते हो। मंडे को रीसेट होता है, हर मंडे को आता है नया। कम टू इलेक्ट्रो, चलो किधर है इलेक्ट्रो? चलो इलेक्ट्रो, चलो भाई, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। छोटा मोटा चीज़ है, तुम बस बाहर रह के खड़ा भी रह के देखते रहोगे तब भी हम फटाफट खत्म कर देंगे भाई सब। छोटा मोटा चीज़ है भाई सब। Gather. तुमको मिल गया डीलो कैसे स्टार्टिंग के लिए तो काफ़ी अच्छा। और बताओ और किसको मारना है? एनिमो, एनिमो को मारना है। चलो एनिमो को भी मार लो, आ जाओ। कम टू प्रीमो। प्रीमो, प्रीमो किधर है? अच्छा पाइरो। Fireworks are gonna get soaked. Let's find shelter quick. Oh, we're not going to make it. Solidify. हाँ जी लाइट अप। पार्टी सेटअप थोड़ा चेंज करा। अरे पार्टी सेटअप थोड़ा चेंज करना है ब्रो। जोंगलो का ज़रूरत नहीं, जोंगलो ओवर पावर हो जा रहा है। चलो आया का लेकर ही, जोंगलो बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो जा रहा है। अरे ये बॉस किधर से जाया जाता है, हम भूल गए। और इस बॉस का रास्ता किधर से भाई? ऊपर है कहीं पे। किधर हो ब्रो तुम? So where are you bro? ले आया का मर जाएगी। यहाँ पे एक चेस्ट है ब्रो तुम्हारे लिए। इधर तो हम फंस गए। ये गया किधर है? हम लोग को इधर टेलीपोर्ट मारते हैं, इधर से फिर उड़ कर चले जाएंगे उसके पास। You'll get frostbite. Looks like I went too far.
एग्जैक्टली है कहाँ ये भाई, पता नहीं चल रहा, लेकिन गुफा में है किधर है? ब्रो किधर ब्रो, थोड़ा बाहर निकलो ब्रो, थोड़ा लेके चलो साथ में थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, मिल गया मिल गया, चलो 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 आगे फाइनली है। अच्छा इसको मारना है। हाउ टू गो देयर, आ जाओ, देखो जैसे हम आए वैसे, जिस तरीके से हम आए ना वैसे आ जाओ। ये अंडरग्राउंड है थोड़ा, एक उधर भी रास्ता है, ऊपर से भी है, एक इधर से भी है, दो रास्ता है, दोनों में से जो मिले आ जाओ। उनको हम आते हैं बाहर तुमको लेने के लिए। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। और बताओ भाई, और क्या करना क्या है, बस तुम बताओ ना, फिर हम तो हैं ही। You should really bring the knights of... क्रायो, चलो क्रायो पे 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट में आ रहा है। Okay, I am back zone. किधर है क्रायो भाई, क्रायो किधर है? अच्छा इसको, अरे ये तो भाई, ये तो भाई कुछ भी नहीं, ये तो सेकंड्स का खेल है भाई, ये तो सेकंड्स का खेल है। वो भी योई मिया के लिए। चलो ब्रो और बताओ, बस तुम बताते जाओ, आज तुम करना क्या है, मारना किसको है, सब सेकंड्स में मारूंगा भाई, सेकंड्स में। डन ब्रो, थैंक यू। अरे थैंक यू की क्या बात है भाई, दोस्त हो तुम अपने, हेल्प तो करना बनता है। चलो मज़ा आया हो तो लाइक कर देना भाई स्ट्रीम को, है ना, सब्सक्राइब भी करके रख लेना चैनल, फिर कभी भी मदद चाहिए आ जाना, आया करो डेली स्ट्रीम पे, मज़ा आएगा। तुम भी मतलब बहुत नए हो ना तुम, तो बहुत मतलब तुमको कुछ नए और भी चीज़ें तुमको जानने के लिए मिलेंगी। अरे थैंक यू क्या, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है ब्रो।
देखो ये सारे एनिमीज है ना, इन सभी को देखो एक बार में मार के दिखाते हैं, एक साथ एक बार में। काजुहा किधर है? देखो एक साथ में एक बार में मरेगा सब। देखे बोले थे ना, एक साथ एक बार में खत्म। हेलो, और बता, और कहाँ पे ट्रेजर होल्डर्स होता है ना, ट्रेजर होल्डर को ट्रेजर होल्डर्स के पास ले चलते हैं, उनको मारने में मजा आता है। एनिमीज ट्रेजर होल्डर्स किधर है? ट्रेजर होल्डर्स दिख नहीं रहे ब्रो। ट्रेजर होल्डर्स ऊपर ही गए होंगे। देखो तो तुमको दिख रहे तो तुम नेविगेट करो, वहाँ पे टेलीपोर्ट मारो। मैं भी खोजता हूँ ट्रेजर होल्डर्स किधर हैं। जो ग्रुप में रहे उसको, हाँ मिल गया ट्रेजर होल्डर्स। चलो आओ यहाँ पे आओ, देखो किस तरह से मरते हैं सारे। एक बार में मरेंगे, एक बार में। ये लोग ऊपर में है क्या? ऊपर में है, चलो ऊपर चला जाए। Into the wind. लोग यहाँ पे अभी उठ जा भाई, सभी लोग इधर आ जाओ, सभी लोग इधर आ जाओ। ये जो आया निशाने में, जो आया सब खत्म। अभी देखो इसको आने देगा, ये खत्म। अरे इसको अभी तक मार ही रहे हो बेचारे को। ये देखो जरा पानी है, ये One with nature. चलो ट्रेजर ले लो जाओ, यहाँ पे ट्रेजर ले लोगे। ट्रेजर अब किधर भागे? इधर। तुम्हारा भी डैमेज गेम के स्टार्टिंग सबसे काफी अच्छा है। मेरा तो इतना भी नहीं रहता था। चलो इधर इन लोगों को देखो कैसे मरते हैं ये लोग। There's no end to this. One with nature. Becomes the hunted. ये ले लो, कलेक्ट करो ट्रेजर। How about we explore the area ahead of us later? एक विश और करके देख ले क्या? चलो एक विश और ला इसके वर्ल्ड में एक्टिव करके देखते हैं। भाई तुम्हारा वर्ल्ड में भाई ओह माय
गॉड भाई साहब, भाई साहब ये क्या हो गया भाई साहब, ये क्या हो गया भाई साहब, भाई साहब ये क्या हो गया। भाई ये सीक्रेट मेरे और तुम्हारे बीच रहेगी, ठीक है। ओ भाई साहब, मजा आ गया भाई। तुम्हारे वर्ल्ड में आए एक बार ऐसा सोचते ट्राई मारती क्या, ट्राई मारती क्या, दैट्स इनसेन है ना ब्रो। ओ भाई राइडन शोगन भाई, फाइनली मेरे पास है राइडन शोगन, क्या बात है भाई। काफी विश किए थे राइडन शोगन के लिए, बहुत ज्यादा विश किए थे भाई। अब तो क्लाउड रिटेनर में भाई हालत टाइट होने वाला है, हालत टाइट होने वाला है भाई क्लाउड रिटेनर में इस बार, बहुत ज्यादा हालत टाइट होने वाला है। देखो क्या होता है भाई, बहुत डर लग रहा है भाई। 50-50 क्लाउड रिटेनर भाई। ओहो, आई हैव पुल्ड बट आई गॉट डी लुक। अच्छा तुम 50-50 हार गए थे, तुमको डी लुक मिला ना, मतलब तुम 50-50 हार गए भाई। अब मेरा 50-50 चांस हो गया क्लाउड, इसके नेक्स्ट बैनर में आने वाली है क्लाउड रिटेनर यार। बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है भाई, बहुत डर लग रहा है। मेरे पास इतने विशेस भी नहीं है भाई क्लाउड रिटेनर के लिए। क्या करूं मैं, क्या करूं भाई, क्लाउड रिटेनर तो चाहिए ना। राइडन शोगन भाई साहब, भाई देखो कौन है ये। 50-50, हाँ 50-50 चांसेस रहता है कि तुमको जो बैनर पे दिख रहा है ना, तो जैसे बैनर यहाँ पे ब्रो, बट हाउ टू बी ऑनेस्ट दैट वाज इनसेन ब्रो, बट टू बी ऑन दैट, या ब्रो वो तो इनसेन तो था ही भाई। भाई आज जानते हो 3 विश किया है, पहला विश किए तो नहीं निकली, दूसरा विश गलती से हो गया, तीसरा विश तुम्हारे वर्ल्ड में भी किया भाई। सोचा एक विश ट्राई करते, क्या पता निकल, अंदर से ऐसा लग रहा था कि भाई निकल सकती है राइडन शोगन, एंड इट्स हियर भाई फाइनली। देख रहे हो मेरा पिटी कितना है। देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50 है ना, 50, 51, 52, 53, 54, 55 पे निकली है, 55 पे निकली भाई। This scenery is wonderful. Surely बहुत enough to डर लग रहा convince है, anyone बहुत to डर become लग a रहा है। wanderer. क्लाउड रिटेनर अभी अब निकलेगी नहीं निकलेगी भाई ना, क्लाउड रिटेनर भी निकालना था, नाइदा भी निकालना था, शाओ को भी निकालना है भाई। डर लग रहा है भाई, लिटरली भाई बहुत डर लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, सच बोल रहा हूँ भाई। भाई ग्लाइडर, इसका ओरिजिनल ग्लाइडर लगा दिया। अच्छा है, आए भाई फुल को नाहिदा तो भाई बेस्ट है, नाहिदा के लिए तो निकालना ही चाहिए था, नाहिदा को तो निकालना ही चाहिए। Time to go. अब हमको राइडन को सीक्रेटली बिल्ड करना पड़ेगा भाई। कम हियर, किधर आना है भाई, 1 मिनट अभी आया मैं। अच्छा ये चेस्ट चाहिए।
Put your back into it. As one with wind and cloud. The wind knows me. एक और इसका दुश्मन है इधर ही कहीं पे, दिख क्यों नहीं रहा? वो किधर छिपा है? अच्छा वो यहाँ पे है। You need to hurry up. Sakura swirl. An unfortunate fault. One with nature. यहाँ पर भी एक चेस्ट है, उसको भी ले सकते हैं। Time to go. जियो वाला कैरेक्टर लेकर आके आओ और फिर इसको करो। Time to go. पूरा नीचे तक जाएगा, एक डोमेन करेगा। My apologies. चलो इधर भी खुल गया। एक जियो कैरेक्टर ले लो। रुक जाओ, हम ले लेते हैं। हम शायद नहीं कर सकते। ये एलिमेंट वाला कैरेक्टर ले लो, जियो वाला। मेरे से नहीं, मतलब तुम्हारा वर्ल्ड है ना, तो तुम मारोगे तभी ये एक्टिवेट होगा। I'd have तुम्हारे पास होगा, वो होगी ना। वेट आई विल चेंज। हाँ ओके, कर लो चेंज। चलो तब तक हम जानते हैं तुम्हारा और उधर का खोल देते हैं। Into the wind. इधर का भी ब्रेक हो गया, उधर का भी ब्रेक हो गया, सब तरफ का ब्रेक हो गया। बस तुम आ जाओ, फटाफट सब जगह लगा दो। Wind strider. One with nature. But bro, Radeon, अरे भाई खुश हो गया भाई साहब। Radeon तो भाई Radeon है ना भाई, कुछ भी हो भाई, वो आर्कन है भाई। Radeon के लिए हम बहुत दिन से वेट कर रहे थे। फाइनली आज लास्ट डे है, लास्ट डे पे निकली है। ओ भाई इंसेन तो है ही भाई। इधर आओ मेरे पास। Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade. अच्छा हाँ, उसको पहले एक्टिवेट कर लो। It is the last link I have to the land of my Come to birth. me. पहले यहाँ आ जाओ ना, इसको पहले कर लो। आ जाओ, फिर साथ में चलते हैं करते हुए।
चलो बहुत सही, इधर आ जाओ। इधर ऊपर वाला एक्टिवेट करो। यू गॉट ऑन लास्ट। हाँ भाई बिल्कुल लास्ट है। बिल्कुल लास्ट में भी। चलो विंड करंट स्टार्ट हो गया, आ जाओ। The wind knows me. ये यहाँ का पानी थोड़ा सुखाना पड़ेगा, तभी ना ऊपर जाओगे। Crumble! Rise! One with nature. यो भाई साहब, 3 चेस्ट, जा मजे करो। 3 चेस्ट लेकर कम टू मी। चलो यहाँ पे तुमको फायर वाला खोजना होगा और तुमको इधर फायर मारना होगा सबसे। चलो बच्चे, क्या खुद ही मर जाएगा भाई, इसको क्यों खुद ही मर जाएगा। ज़ोंगलू को शॉक से मर जाएगा, शॉक वेव से। फायर मारो, फायर। हाँ बूबा, इसी तरह से सब जगह खोजो और मारो। क्या इधर इधर देखिए, इधर उधर। एक यहाँ पर है ब्रो। चलो यहाँ वाला तो एक्टिवेट कर दिया हम, और एक ऊपर में है इधर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, एक ऊपर इधर। ऊपर में जाओ। Solidify! तुम इधर नहीं, तुम इधर। चलो 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 मेरे साथ, चलो मेरे साथ। इसको भी करवा पहले एक बार में एक काम। वहाँ पे देखो, यहाँ पे है, इसका एक्टिवेट करो। One with nature. Gather. इसको छोड़ दो, इसको एक्टिवेट करो, इसको मारो, इसको रहने दो, कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता। और कहाँ है? और
Time to go. ऊपर में है क्या? ऊपर में है क्या कुछ? चलो खुल गया, आ जाओ आ जाओ, हो गया सारा मिल गया तुमको, चेस्ट खुल गया। अब इसको फॉलो करना, इसको into the wind. Time to go. Time to go. फॉलो करो उसको। One with nature. Now I got stomach cramps. Stabilize. Solidify. Drop. ले लो। चलो इधर का तो सारा एक्सप्लोरेशन हो गया। जो चीज़ यहाँ से तुमको मिल सकता था सब कुछ तुमको मिल गया। इस साइड अब कुछ बचा है क्या? इस साइड चलो देखा जाए। इस साइड मिल सकता है कुछ, क्योंकि एनिमीज है ना यहाँ पे। Gather. Fallen leaves, adorn my night. The wind knows me. This is order. Solidify. खाना कहाँ से खा पाएंगे? हाँ इडली दे दो थोड़ा सा, एक दो दो। लिट्टी खाने का मन करा था बहुत, मन ही नहीं रहा। चोखा उस दिन खाए थे ना, वो अच्छा लग गया था। Come to me, किधर हो तुम? यहाँ टेलीपोर्टर, अच्छा इधर है टेलीपोर्टर। डोमेन ये सब खोल के रखो भाई। डोमेन क्यों नहीं खोल रहा है? खोल लो सब। हाउ टू ओपन चीज, इसको ओपन करना है। वो ओपन नहीं होगा, वो तुमको ये लेकर के जाना पड़ेगा। देखो ये तो सामने तुमको दिख रहा है ये चीज़,
ये चीज़ तुमको दिख रहा है, ये लो पहले, ये लो, इधर आओ, ये लो, उसको लो, उसको लो, फिर ऐसे चल जाओ, एंटर कर दो, अंदर जाओ, जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, ऐसे अंदर जाओ, अंदर जाओ। वो तुम्हारा अभी अपग्रेड नहीं हुआ, तुमको पेड़, ये वाला अपग्रेड का पेड़ तुम्हारा अनलॉक हुआ है अभी तक? तुम्हारा तो अभी तक पेड़ भी नहीं अनलॉक हुआ है शायद। नहीं, पेड़ तो हो गया अनलॉक। यहाँ है ना, इस पर तुमको विश करना पड़ेगा पहले पेड़ पे आकर। इधर आओ, बताते हैं, इधर आओ, इस पेड़ पे जाओ और विश करो तो तुम्हारा अनलॉक होगा। यहाँ पे आना, ऐसे विश करना, ठीक है? ये ऑनलाइन में नहीं होगा, ये तुमको सिंगल प्लेयर में करना होगा। इधर तुम करके देखो, ठीक है? हम तुमको अपने वर्ल्ड में जाकर दिखाते हैं कैसे करना है, कैसे विश करना है, ठीक है? यहाँ पे जहाँ पे थे हम पहले, वहाँ पे आ जाओ। अब देखो तुमको अपने वर्ल्ड में जा कर के दिखाते हैं। देखो जैसे इधर मैप खुल जाओ। अरे मैप यार, अच्छा मैप में हम यहाँ पे थे, कोई बात नहीं। टेलीपोर्टर इधर खुल गया ना, तो इनाजुमा आ गए हम, ठीक है? पहले हम अपना ये कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमको कुछ पॉइंट्स, वो जो होता है ना इनाजुमा का कॉइन होता है ना, उधर ही ये लगता है। पहले हम ये कलेक्ट कर लेते हैं एक चीज़। वहाँ पर ऑफर कर देते टाइम यूज़ आएगा। अब देखो, यहाँ पर आ जाना है तुमको, टेलीपोर्ट मारना है, फिर तुमको पेड़ के पास हो ना भाई। वरुण भाई किधर भाग गए? वरुण ब्रो हो ना चैट में भाई, मैसेज वैसेज करो थोड़ा, बताओ भाई। पता चला कि तुम हो ही नहीं, ऐसे ही बताया जा रहा है किसी को। Quit following me. यहाँ पे आना है तुमको, ऐसे यहाँ पे विश मार देना है। 23 है भाई, 2 और रहता है ना मेरे पास, तो हम एक और विश मार देते। यहीं से तुमको रिवॉर्ड मिलेगा। देखो ये जो दिख रहा है ना, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ऐसे ऐसे तुमको बढ़ाना होगा। लेवल 5, लेवल 6, ऐसे ऐसे करना होगा तुमको, लेवल बढ़ाना होगा सबका। मेरा भी स्टार्टिंग ही है, मेरा भी ज़्यादा कुछ अनलॉक नहीं हुआ है। यही लेवल तुमको बढ़ाना है ना, 11, 12, 13, 14, 15 तक जाता है। मेरा भी लेवल 5 पे है। ये लेवल बढ़ाओगे तभी अंदर जा पाओगे। बाकी सब तो ठीक है। तो बाबा सुसु लग जाएगा। ओके चलो गाइस, तो आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं स्ट्रीम, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच अभी तक बने हुए जो भी आए थे पहले भी, सभी थैंक यू सो मच। ओह भाई साहब 4 घंटा होने वाला है आज तो स्ट्रीम। कोई है ये भाई या नहीं भाई, या खेले ऐसे बात कर रहे? वरुण भाई है या चला गया? You think I've got a sharp tongue?
I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. I'm here हो ना, तो देख लिया ना कैसे विश करना है। विश मतलब उधर हाँ पैर पे। इसी तरह से सुमेरु में भी एक पेड़ है, उधर भी जाकर तुमको यही सेम चीज कर सकते हो। और फाउंटेन में है फाउंटेन, उधर भी तुम जाकर के ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर इलेक्ट्रोक्लस है, किधर भाई? इलेक्ट्रोक्लस किधर है भाई? इधर कहीं दिख रहा है क्या तुमको वरुण ब्रो? यहाँ पे अंडरग्राउंड हो सकता है। मेरा भी बहुत जगह अभी तक लॉक्ड है, इसके अंदर हो सकता है ना, लेकिन इसके अंदर जाने का रास्ता तो पता नहीं है ब्रो। की भी नहीं है मेरे पास, देखो वहीं पे है। की नहीं है तो की हमको लगता है इसमें मिलेगा। इसको डिफीट करके देखे क्या? चलो इसको डिफीट into the wind. As one with wind and cloud. Cry louder. The wind rises. You're dead. That's far enough. Falling into the abyss. भाई सब स्पाइक्स मारता है, इसका तुमको पता ही नहीं। Take it easy. Things are about to get dicey. That was way too, but I will never forget that. That was way too okay. अरे भाई सच्ची में भाई मजा आ गया था, है ना भाई? वो पुल तो भाई हिस्टोरिकल पुल हो गया। Busted. Into the wind. Take flight. The wind knows me. Gotcha. Kamisato art. Sumetsu. देखो चाबी मिलता है या नहीं। Today is a lucky day. चाबी तो नहीं मिला ब्रो, इतना फाइटिंग ये दम चाबी मिली। ओह that was way too OP on the last day you got यार भाई साहब, बोलो नहीं भाई, मजा आ गया। How to open? Come here. I have level 2. Thank you bro for everything. I am here. अच्छा अरे भाई तुम्हारा चैट नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच भाई, तुम आ गए, मज़ा आ गया। डेली आया करना टाइम मिले तो, ठीक है? आओगे तो मज़ा आएगा। चलो और कुछ बात करना है तो बताओ। How much have you spent on this game? अभी तक तो कुछ भी स्पेंड नहीं किए हैं इस गेम में। एक बार विंकलिंग मून खरीदे थे बस, फिर उसके बाद गेम खेलना ही छोड़ दिया था। कुछ भी नहीं स्पेंड किया, ऐसा समझो। हम भी F2P ही हैं। स्ट्रीम टाइम देखो, स्ट्रीम टाइम है कि 6 बजे भी स्टार्ट करते हैं, कभी कभी मैक्सिमम 7 बजे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो 6, 7, 8 के बीच में देख लेना, मतलब स्ट्रीम करते ही रहेंगे। 7 बजे मेरा मैक्सिमम टाइम है, ठीक है? 7 बजे तक तो स्टार्ट कर ही देते हैं, ठीक है? कभी कभी पहले कर दिए तो 6 बजे, नहीं तो 7 बजे तो कंफर्म स्टार्ट करते ही हैं। A blade embraces its duty. ठीक है ना? तो मिलते हैं कल नेक्स्ट स्ट्रीम पे, ठीक है? थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। चलो एंड करते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।
bro. Chalo, tata, bye bye.